Alright, guys. So today we have the time and work session. Okay. So we have around 40 questions today. Okay. Let us start. You know the procedure. Let's start with the first one. Start solving. All right, Nagraj. All right, Lakshay. Perfect. Both of you. Good. Devesh, good. Sorry. Anshruti, Kia, Nikita, good. बाकी लोग. It's a very simple question, guys. ये हर्षा है कि नहीं है क्लास में? हम्म. ओशो wrong. Tichika right. ओशो क्या कर रहा है बेटा? ऑल राइट स्वर्ण, ऑल राइट बेटा. वेंकट राइट. लास्ट 1 minute guys. Last 1 minute would be fine. Ashutosh very good. Osho good. Last 30 seconds. Now I lose the game. All right guys, so what do we have? Sardaman wrong beta. So we have been given that Amit can finish working 4 days 5 hours a day, and Sumit can finish the same work in 3 days working 6 hours a day, right? So that means I can say, if I say that Amit does 1 unit in 1 hour, right? So I can say that Amit will do 5 units in 5 hours. So if Amit is able to do 5 units in 5 hours, that simply means that this simply means in 1 day he's able to do 5 units.
So in 4 days of time, he will be able to complete 20 units, and that will be a total work, right? So a total work will be 20 units. Now Sumit is also doing the same work, and Sumit is doing these 20 units in 3 days. So every single day he is doing what? 6.66 units, right? That means 6.66 units he is doing in 1 day, and his 1 day work is equal to what? 6 hours. So Sumit in 1 hour is completing what? 1.11 unit, right? 1.11 unit. Okay. So now it has been given that if Amit works for 4 hours, so that means Amit will be doing 1 into 4 units, and Sumit will be doing 1.33 units, right? Because he is doing 1.11 unit every hour. So for 3 hours, he'll be doing 1.11 unit every single hour. So total work that would be done over here would be what? 7.33 units, right? 7.33 units is the work they are doing together in a day. Now the question is, how much time will they take to complete the task? The task is 20 divided by 7.33. Now obviously this is 0.33, so to convert it into a integer number, you need to multiply both by 3. So this would be 60 divided by 7, 3, 21 and 22. So this would be 30 divided by 11. That is the correct answer. Clear hai? Guys, clear hai? Any doubts? Guys, any doubts from this? देखो फटाफट बोलो, है ना? डाउट है तो बोलो, नहीं है तो बोलो, लेकिन प्लीज ये हरकत मत करो, है ना? चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. ट्राई दिस वन. वर्क डन कुछ भी पकड़ सकता है साकिब, दैट इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी प्रॉब्लम. वर्क डन कैन बी एनीथिंग बेटा. वो कुछ कैलकुलेशन में तूने गलती करी होगी, बिकॉज ऑफ दैट. भानु राइट, लक्ष्य राइट, शेखर वेरी गुड. गुड बेटा. नागराज गुड. परफेक्ट. Swarna, are you? Am I audible to you now? Nagraj, good. Osho, good. You cannot hear. अच्छा. Yes, yes, Swarna, probably. Swarna, what you can? अच्छा ये तो सुन ही नहीं पा रही है, मैं बोल क्या रहा हूँ इसको. किया wrong बेटा. Anshruti, right. Good. Dipali, wrong बेटा. Devesh, good. Last 1 minute. बड़े बोरिंग लोग हो तुम लोग.
What, Nagraj? Your answer is correct. Stupid guy. बोरिंग लोग, यही बोरिंग लोग, कोई खेलता वेलता कुछ है ही नहीं जीवन में। कर क्या रहे हो तुम लोग? खाली पढ़ाई, वो भी नहीं कर रहे हो ढंग से। idiots। कैट कोड लिखेगा, कैट जिसको लिखना है वो लिखेगा। कैट लिखेगा ये मतलब थोड़ी जीवन छोड़ दोगे। तो नहीं, पढ़ाई करना चाहिए। चलो दीपाली, नहीं बेटा, रॉन्ग। ऑलराइट गाइस, लेट्स से the question is telling you that a group of men decided to do a job in 6 days. Do we know the number of men? No. So let's say the number of men that we have over here is n, right? Then it is saying, but since 10 men dropped out every day, the job is completed at the end of 9th day. Okay, so that means on day one, if we talk about day one, we have all the n people working. Let's say one man does 1 unit in 1 day, right? So men will do n units in that particular day. Now comes day two. Now day two, what happened was the total number of people became n minus 10. So that will be the number of units. Similarly, on day three, it will be n minus 20 people and that many units. Similarly, in the similar manner, if this goes on, finally on day 9, there will be n minus 80 people who will be working, right? Now, and total units would be that would be done is n minus 80, right? So how much is the total work done, guys? The total work done is the summation of this. This summation is 9n minus 360 is the total work that they have done. And the total work in both the cases is same. So here every day we were doing n units and we were doing it for 6 days. So the total work over there was 6n units. Now both the total works are equal. So this equation would be formed and let's solve it. You will be getting 3n is equal to 360, n is equal to 120. This will be the correct answer. Clear? Abhi clear hai? Yes, Moksh, 6n. Is it clear, everyone? Let's move ahead in that case. 6n कैसे आया भाई? n मैन थे, 1 man 1 unit करता है, तो n मैन n unit करेंगे और वो काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकते थे। तो हर दिन n unit हो रहा है 6 दिन तक, तो टोटल काम कितना हुआ? n units every day for 6 days, total work 6n. All right, let's move ahead. Try this. What if we would have been, what if they were not leaving? मतलब जयंत अनम्यूट कर, बोलना। सर मैं इसको ऐसे कर रहा था, जैसे जैसे ये बता रहे हैं ना, हर एक दिन में 10 बंदे छोड़ के जा रहे थे। हाँ, अब मैं ऐसे एज्यूम करता कि अगर मान लो डे 9 तक जैसे ये लोग एक्सटेंड हो गए हैं, 6 से 9 दिन तक इनका काम एक्सटेंड हो गया। है, आइडियली जो इनका टाइम था, ये जो भी एन नंबर ऑफ मैन थे, इनको अपना काम 6 दिन में पूरा करना था। हाँ, बट क्योंकि रोज 10-10 मैन इनके कम होते जा रहे थे, तो इनको 9 दिन लग गए। 9 दिन लग गए, हाँ। तो इनका 3 दिन का काम एक्सटेंड हो गया आइडियली। 3 दिन का काम थोड़ी एक्सटेंड हो गया, मतलब टोटल वक्त तो वही रहा, बट क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स कम होते गए हमारे काम करने के, जिस वजह से वो एक्सटेंड हो गया नंबर ऑफ डेज। मैं उसी चीज से इसको रिलेट करने की कोशिश करता, इसलिए आंसर नहीं आ पा रहा था। मतलब मैं कुछ थ्री, मतलब वो जो 3 का डिफरेंस आ रहा था, उससे इसको कुछ करने की कोशिश कर रहा था मैं। है कुछ पॉसिबिलिटी वैसे? लग तो नहीं रहा, नहीं, वैसे नहीं आएगा। क्योंकि जो है हर दिन अलग अलग टाइप के लोग छोड़ रहे हैं ना, हर अलग अलग बंदे छोड़ते जा रहे हैं ना, तो कैसे रिलेट करेगा उसको वहां पे? लेकिन हमें, जैसे भी आपने कहा कि एक मैन 1 यूनिट काम कर रहा है, तो हमें उनकी एफिशिएंसी वो भी तो नहीं पता, तो हम तो तो सबको वो तो मैं सेम कुछ एज्यूम। भी एज्यूम कर सकता हूँ। एफिशिएंसी तुम जो चाहो वो एज्यूम कर सकते हो। वही मैं तो, इसलिए मैं सबकी सेम एज्यूम करके चल रहा था, हाँ, तो इसलिए मैंने। सेम ही एज्यूम करनी है, वो तो बोल ही रहा है कि सेम है, ये तो वो सबको बोल ही रहा है कि सेम है। एफिशिएंसी में कोई अंतर नहीं है। और एफिशिएंसी तेरे को 50 लेनी है तो 50 ले, 100 लेनी है तो 100 ले, क्योंकि अगर तू 50 लेगा तो 50 के हिसाब से काम हो जाएगा, 100 लेगा तो टोटल वर्क एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा ना। जैसे लेट्स से कि अगर तू कोई चीज कैलकुलेट कर रहा है, अगर तू बोलता है कि मैं एक दिन में एक पन्ना लिख सकता हूँ और मेरे को 5 दिन लगते हैं, तो तेरा टोटल वर्क 5 पेज हो जाएगा। और वहीं तू बोलेगा नहीं, मैं एक दिन में मैं मानूंगा कि मैं 10 पन्ने लिख सकता हूँ, मैं अभी भी 5 दिन में काम करूँ, तो अब अभी भी तेरा काम 50 यूनिट हो जाएगा। लेकिन उसके रिस्पेक्ट में दूसरे का भी तो रेशियो उसी हिसाब से इंक्रीज कर जाएगा ना, तो आंसर तो उस केस में हमेशा सेम आएगा। समझा?
Okay. ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। Adit. Okay. Okay. Chalo. All right, guys. Let's move. Try this one. Guys, just give me 5 minutes. I have to remove my car. All right, guys, I'm back. Okay. Jayant wrong. Okay. Then Tia right. Aditya wrong. Osho right. Raj right. Anshruti right. Aman wrong. Rohan right. Shrihita right. Vaibhav wrong. Nagraj wrong. Aman right. Last 1 minute. Saroj right. No, Aditya. No. Venkat right. All right, guys. Let's say that we have been given there are 8 men and 4 boys who can finish a piece of work in 5 days. You know, it's a very classic, simple question. We have always done it. 8 men
and 4 boys can do the work in 5 days. Similarly, 6 women and 8 boys can do the work in 5 days, which is also similar to 4 men and 6 women completing the work in 5 days, right? So 5 gets cancelled. What do you have over here is that 8m plus 4b is equal to 6w plus 8b. Let's say one equation would be over here. And the other equation that we can get is 6w plus 8b is equal to 4m plus 6w, right? 6w goes from here to here, right? What do you have is 2b is equal to m, right? So if I say that my m is equal to 2, in that case, my b will become equal to 1. When my m is equal to 2, my b will become equal to 1, right? Now, applying that same thing over here, right? So 2b is equal to m, right? So 8m plus 2m is equal to 6w plus 4m. This is what we have. So this is 10 minus 6, that is 6m is equal to 6w. So I know that m is equal to w, right? So when m is equal to 2, in that case, b is equal to 1. In that same case, w is also equal to 2. So we know the efficiency of the man, we know the efficiency of the boy, we know the efficiency of the woman now, right? Now the question is that in how many days can one man, one woman, and one boy finish the work at the double efficiency? So that means this person, man, is working with at 4 efficiency, boy is working with efficiency of 2, woman is working with efficiency of 4. That means in a day together they are able to do 10 units. And how much was the total work? The total work was 4 into 2 plus 6 into 2 multiplied by 5. That is 8 plus 12 multiplied by 5. That means 100 units was the total work. Currently, they are doing 10 units per day. So how many days will they take? They are going to take 10 days to complete the work. Right? Option number C becomes my right answer. Clear hai? Guys, is it clear to everyone? Any doubts? सर ये m इक्वल टू b इक्वल 1 कैसा है, एक बार बताना. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया. अच्छा, ये कैसे मैंने हाँ. लिखा? भाई मेरे को रिलेशनशिप पता चल गई m और b की, राइट? तो b क्या है? m का आधा है. तो अगर तो अब एफिशिएंसी तो तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है? तो मैंने मान लिया कि अगर b1 है तो m2 होगा. तुम कुछ और मानना चाहो कुछ और मान लो. आंसर इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट? क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में टोटल वर्क भी उसी हिसाब से आएगा, उन्हीं एफिशिएंसीज पे आएगा. भाई टाइमिंग तो वही है. तो तुम मान लो कि 10 और 5 मान लो तो भी जो है टोटल वर्क वही आएगा, उस हिसाब से वुमेन का वही आएगा. तो उसमें कोई इशू करता नहीं है, ठीक है? सर मैंने इसको ना ऐसे इक्वेशंस बना के किया, तो वैसे भी कर सकते हैं क्या? कैसे? जैसे मतलब 1 मैन 1 डे 1 यूनिट निकाल लिया, तो 8 मैन 1 डे 8 यूनिट एक हो बात गया. बताओ आशुतोष, वो सब छोड़ो. मैंने क्लास में एक क्वेश्चन बोला है कि नहीं? एकदम डिट्टो यही करना, तुम्हारा आंसर स्ट्रेट अवे आएगा. क्लास में कराया है कि नहीं कराया ये चीज? कराया है. तो क्यों एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाना? जब तुमको एक प्रोसेस पता है, बिल्कुल क्लियर कट प्रोसेस पता है, इक्वेशन बनाओ इस तरीके से, आंसर तुम्हारा 100% तुरंत आ जाएगा. एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाना? जवाब दे दो इस बात का. ठीक है सर. ठीक नहीं है, सवाल पूछो उसका जवाब दो. उसका जवाब ठीक है नहीं होता है. बोलो बोलो. सर वो क्या? और तुम क्या कर रहे हो? तुम बोल रहे हो एक मैन को मैंने 1 यूनिट मान लिया. मान लो, तो उससे क्या होगा? अब बताओ क्या करोगे आगे, समझाओ. तुमको बी का रिलेशन पता है एम से? डब्ल्यू का रिलेशन पता है एम से? नहीं पता है ना? नहीं. तो रिलेशन कहाँ से निकालोगे? ऐसे ही तो निकालोगे. स्टार्ट सॉल्विंग दिस. ध्यान दे शेखर.
Kia, correct. Bhanu, correct. Raj, correct. Rohan, correct. Nagraj, correct. Shekhar, correct. Lakshya, correct. अरे लक्ष्य, हाँ सर। सुबह डांट खाने के लिए रुका था क्या? सही आंसर आज दे रहा है हैं? देवेश करेक्ट, अंशुति करेक्ट, गुड लक्ष्य, वेरी गुड. So again, it's a very simple question. So what do we have? 12 men complete a job in 10 days. So let's say 12, every man does M units. So 12 men will do 12 M units. For 10 days they need, right? Similarly, 20 women will do 20 W units for the remain for 12 days, right? Total work in both the cases is same. So I can say 120 M is equal to 240 W, or I can say that M is equal to 2W, right? So if my man key efficiency is 2, my woman key efficiency is going to be 1, right? Then what do you have? 8 men and 4 women started working, and after 9 days 10 more women joined. Initially, let's calculate the total work. So the total work we can say is 240 units, right? Now when initially 8 men and 4 women are working, okay, 8 men and 4 women are working, so together they are doing 16 plus 4, that is 20 units, and they do 20 units for 9 days, right? So in 9 days they will cover up 180 units of work. That means the remaining 60 units that is left will be done by already 20 units we were doing. These 10 women will again do 10 more units. So in total, we will be able to do 30 units. How many more days will be required? 2 more days will be required. The correct answer will be option number. Clear hai? Diksha good, Aditya good, Pravesh good. Abhi clear hai everyone? Let's move ahead. Try this one. बेटा म्यूट कर ले, जो भी है ध्रुव म्यूट कर ले. कौन कौन है? अरे किसने किसने सीएल दे दिया, आईएमएस दे दिया, कौन कौन? मैं तो एक आज दूंगा. अच्छा guys, I'll be having a batch meet from what time should we have the batch meet? Tell me. What time would be fine? 10? No, no, wait, 10. अबे बहुत लेट हो जाएगा. 9 बजे is fine. I'm okay for 9 o'clock. I'm in for 9 o'clock. No, chalo. Good. Good guys. Aditya perfect beta. Rohan perfect. Moksha wrong. Osho right. Venu right. Diksha right. Bhanu right. Kia wrong. Diksha right, Shekhar right, Pravesh wrong, Jayant right, Kia right, Nagraj right, Raj wrong.
Anshruti right, Shrita wrong. All right, guys, let's see what do we have. Okay. Lakshay, absolutely correct. Okay, so A can complete a piece of work in 4 days. B takes double the time taken by A. Okay, so let's say A does 4 days, B takes 8 days, C takes double of B, that is 16 days, and D takes double of C, that is 32 days. Now let's say the total work for us will be the LCM of all these times. So the total work, let's say, is 32 units. In that case, A is doing how much? 8 units. He is doing 4 units. He is doing 2 units, and he is doing 1 unit, right? Now it has been said they are paired in groups of 2 each. That means दो का group बनेगा. One pair takes 2/3 the time taken by the second pair to complete the work, which is the first pair. So our pair is going to take 2/3 of the time, right? 2/3 of the time we are going to take, or basically we can say if I'm taking 2/3 time of yours, right? If I'm taking 2/3 time of yours, that means I am doing 3/2 work of yours, right? All of you are clear with this, right? If I'm taking 2/3 the time of yours, that means I'm doing 3/2 the work of yours. Everyone is clear on this, right? So that means अच्छा अभी देखो, it simply means अभी मेरे पास what is the total work that these people can do? 8 4 12 2 14 plus 1 15 units. So 15 units may one of them would be doing x units. Let's say one pair is doing x units, the other pair will be doing 3x/2 units, right? So this we can say is 5x/2 by summation is equal to 15. So x will be equal to 30 divided by 5, that is 6. That means one pair is going to do 6 units, the other pair is going to do 9 units, right? Now 9 units ka there is only one possibility, A plus D. That means the first pair that is going to do 3/2 of the work or in 2/3 of the time is the group AD, who are able to do 9 units in every single day, as compared to B and C, who are only doing 6 units in a day. Clear hai? Abhi clear hai? Any doubts? All right, let's move ahead. Solve this. Lakshay, Osho, just a second, too many of you have given the answer. Kia right, Lakshay right, Osho right. Just a second, just a second. Yeah, all of you are right. All of you are right. Good. All of you are right till now. Pravesh, Nagaraj, everyone is right. यार एक साथ इतने सारे लोग आंसर देते तो सब खो जाता है. मानसी right, good. Bhanu right. Last 30 seconds would be fine. Saket right, Siddhant right, Diksha right. All right, Shambhavi good. So the capacity of tap Y is 60% more than that of X. So let's say X does 1 unit, so Y will do 1.6 units, 60% more. Both taps are open simultaneously. They take 40 hours to fill the tank. So that means together they are able to do 2.6 unit in an hour. So in 40 hours, how much work are they going to do? They are going to do 104 units, right? That means the total work that we have is 104 units. And now it's asking that how much time will Y alone take. So Y is doing 1.6 units. So how much time is he going to take?
65 hours. Option number B is the right answer. Clear है? Clear है? ये कैट का नहीं, ये कैट का नहीं है. कैट के क्वेश्चन 31 से 40 कैट के क्वेश्चन है, 1 से 30 अलग है. ठीक है? Solve this. आदित्य परफेक्ट बेटा. जयंत परफेक्ट बेटा. अरे यार शिट. ओए एनोटेशन नहीं, गोली मार दूंगा सबको. कैसे ऑफ करते हैं? हर्षा रॉन्ग, किया राइट, दीक्षा राइट. आशुतोष रॉन्ग, ब्रज राइट. क्या हो गया था आदित्य एलआरडीआई में? इतना बुरा क्यों हो गया? कोई खास वजह? नागराज रॉन्ग, वेनु राइट. ओहो, वही नहीं यार. अनुश्रुति राइट, प्रवेश रॉन्ग. हाँ, वही वही सिचुएशन बनती है तब थोड़ा टेंशन बढ़ता है. सिद्धार्थ राइट, अमन रॉन्ग, रोहन रॉन्ग, साकेत राइट. ऑलराइट गाइस, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव. सो अपने को क्या बोल रहा है कि there are three people A, B and C. Now A can do 2 pages in a minute, right? Sorry, 1 page in 2 minutes, right? 1 page in 2 minutes. B can do 1 page in 3 minutes, right? And C can do 1 page in 4 minutes. अरे nice, that's good, congratulations. तो ज्वाइन कर रहा है या नहीं? लाइक क्या सीन होता है, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है. मतलब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है या फिर लाइक सम पार्ट इज लेफ्ट? ज्वाइन का क्या मिल रहा है इस समय? तेरा मूड एमबीए का है तो अभी क्या वैसे मिल रहा है? इनकम टैक्स. इनकम टैक्स लोड तो पड़ेगा स्टार्ट. पैसा मोटा है. ऑलराइट, तो अपने को क्या बोल रहा है गाइस कि द टाइमिंग हैज टू बी द सेम, राइट? सो इफ द टाइमिंग हैज टू बी द सेम, दैट मींस लेट्स से द एलसीएम. ठीक है, तो अगर इक्वल मेरे को करना है टाइम, so the best way to equalize them is LCM. तो LCM of 2, 3 and 4 would take me to a value of 12 minutes. So basically it is saying कि let's say, मतलब एक अपने लिए मैं कर रहा हूँ कि भाई if 12 minutes was there, right? So in that case how much pages would I read? By if let's say because the timing for all of us has to be the same, है ना? In that case, so let's say the timing for all of us is 12 minutes. So if the timing for all of us is 12 minutes, so I can do, let's say A can do 1 page in 2 minutes, so he'll be reading 6 pages. B can do it in 3 minutes, so he'll be reading 4 pages, and C can do it in 4 minutes, so C will be doing 3 pages. Right? If the timing is 12 minutes, we do not know the timing, so we'll be representing the work done by them in this ratio. Right? That A will be doing 6x of the work
B will be doing 4x of the work, C will be doing 3x of the work. Up till here, is it clear to everyone? Up till here, is it clear, guys? Ratio of work we have calculated. Now you know that these are the works that these people are doing, 6x plus 4x plus 3x, right? Sorted, koi dikkat nahi, Jain, right? And we know the total work is 78 pages. So now from here I get that 13x is equal to 78. So x is equal to 6, right? So now the question is how number of pages that Bob should read. So we assume that we realized that Bob is going to read 4x, where x is equal to 6. So Bob is going to read 24 pages. That is option number A will become my right answer. Clear hai? Guys, clear hai? All of you? All right. Let's move ahead to the next. Try this one. हाँ हाँ बता जैन टाइम पर आता हुआ क्वेश्चन नहीं तू मेरे को आराम से कॉल करना है ना, टेंशन नहीं है, मेरे को आराम से कॉल करना, ठीक है? नहीं तो अभी जब लंच ब्रेक अपन लिया जाएगा उस समय जो है कर सकता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोनों का अपना अपना वो है आदित्य, लाइक डिपेंड्स अपॉन व्हाट field you want to get into. You want to get into the corporate world or you want गवर्नमेंट जॉब में, बट ऑब्वियसली सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्राइवेट। इस समय प्राइवेट का हालत देख ही रहे हो, तो सारी चीजों को काउंट में लेना पड़ेगा। एंड देन पर्सनल प्रेफरेंस, पैसा एंड पीस एट द एंड। देखो रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं, ऐसी बात बोलनी थी कि रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी पड़ी। किया रॉन्ग, जमाना बहुत बुरा है नागराज, क्या बताया जाए। किया गलत है, बाकी लोग ट्राई करो। मोस्ट ऑफ यू विल गेट दिस रॉन्ग। देवेश रॉन्ग, किया राइट, निकिता रॉन्ग, लक्ष्य रॉन्ग, आई न्यू इट। आदित्य परफेक्ट बेटा। ब्रज रॉन्ग, शेखर रॉन्ग, देवेश रॉन्ग। ये सोच रहे होंगे सलाम गलत कर क्या रहे हैं, क्यों आदित्य? These people must be thinking. रोहन रॉन्ग बेटा, जयंत राइट, वैभव राइट, वैभव रॉन्ग, सॉरी वैभव रॉन्ग, साकेत रॉन्ग, till now I guess only Jayant, Kia and Aditya have given me the right answer. They Aman wrong नहीं, देवेश गलत है वो। What do you guys think? एक क्वेश्चन आसान दिया तो अगला भी आसान देगा क्या? हाँ बात करता है। ओशो परफेक्ट बेटा, शेखर रॉन्ग। करो करो लास्ट 1 मिनट। हाँ बेटा अंशुति गलत है। भानु दीक्षा, अमन, देवेश वेरी गुड। भानु रॉन्ग बेटा। What are you trying to call me, monkey? Anshruti right, Rohan right, Vraj right, good. हर्ष रॉन्ग बेटा। रोहन तेरा आंसर हाँ सही है बेटा, सही है, अभी सही है। ऑलराइट, सो व्हाट डू वी हैव? प्रवेश रॉन्ग बेटा। सर वो क्लीनिंग पार्ट नहीं पकड़ना था। ये चीज एक बात बताओ,
वो याद है फ्रॉग वाला क्वेश्चन, फ्रॉग जंप वाला, या वो वॉल ब्रेक वाला? क्या सिखाया था? दिमाग का इस्तेमाल करोगे कि नहीं करोगे? हैं? चलो, let's see what do we have. So, okay, in a nut and bolts factory, one machine produces only nuts at the rate of 100 nuts per minute and needs to be cleaned for 5 minutes after production of every 1000 units. So when we are talking about nuts, that means for you creating 1000 units, we need 10 minutes. And after those 10 minutes, the machine would still be stopped for the next 5 minutes, right? So the total time, basically the total time taken into creating 1000 nuts is coming out to be 15 minutes, right? And talking about bolts, so bolts we are producing 1500 volts at the rate of 75 volts per minute, right? So how many minutes do we need? We need 20 minutes for this. And after this, the machine is stopped for again another 10 minutes. So basically 1500 units are produced in 30 minutes. Now the question is, to produce 9000, how much time is required? So for producing 9000 nuts, we need, see, this is one cycle for nuts, this is one cycle for bolts, right? How many cycles do we need for nuts? We need 9 cycles. And how many cycles do we need for bolts? We need 6 cycles, right? Now the total time required over here is, see, one cycle is 15 minutes, so the total time for this would be 135 minutes. The total time for every cycle is 30 minutes, so 6 into 30, that is how many what do we have? 180 minutes. Now guys, for those who are telling 135 minute, भाई 135 मिनट तो नट का है ना, बोल्ट भी तो पूछ रहा है. इट इज बीइंग आस्क्ड कि बोल्ट एंड नट दोनों का प्रिपेयर होगा. तो जब बोल्ट प्रिपेयर ही नहीं हुआ है तो 135 हाउ कैन बी दैट द राइट आंसर? उसके बाद जो एक्स्ट्रा दिमाग लगा के 130 बोल रहे हो, तो इडियट्स वही चीज इसके साथ कर देते. ये कौन सोचेगा कि बोल्ट तो अभी प्रिपेयर ही नहीं हुए हैं. एंड पीपल गिविंग 180, यू गाइस टेल मी कि 180 मिनट्स में ठीक है, 1500 के हिसाब से 180 मिनट्स में जो है तुम्हारा काम हो गया, राइट? बट हर साइकिल में, एवरी साइकिल के जो एंड के 10 मिनट्स हैं वो तो क्लीनिंग के लिए है ना. तुम क्लीनिंग के लिए क्यों वेट करो? तुम्हारा काम तो हो गया, तुम तो घर चलोगे. तो उसमें से ये क्लीनिंग के 10 मिनट्स वुड बी रिमूव, एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज टर्निंग आउट टू बी 170 मिनट्स. दैट इज ऑप्शन नंबर सी बिकम्स माय राइट आंसर. क्योंकि दोनों को मिलाकर के 170 मिनट्स के बाद मेरे प्रिपरेशन मेरी हो चुकी पूरी तरह से. इज दैट क्लियर नाउ? एक फिर से कौन सा? हर्षा बता बेटा. हर्षा क्या चीज? अनम्यूट करके बोल दे सर एक बार दोबारा बताओ ना. पूरा. नहीं नहीं, ये जो कैलकुलेशन लास्ट का बताया 135. देख मेरे को 1000 नट बनाने में 15 मिनट लगते हैं. एक साइकिल लगती है 15 मिनट की, करेक्ट? अबे हाँ ना बोल. हाँ. तो 9000 बनाने में मेरे तो एक साइकिल में मैं तो 1000 बनाता हूँ, तो 9000 बनाने में 9 साइकिल चाहिए. हर साइकिल 15 मिनट की, तो 135 मिनट चले गए वहां पे. फिर आओ बोल्ट पे, तो बोल्ट में 1500 बनाता हूँ. बोल्ट में 1500 बनाता हूँ, तो मेरे को कितनी साइकिल चाहिए? 6 साइकिल चाहिए. एक साइकिल मेरी 30 मिनट्स की है, तो टोटल टाइम मेरे को कितना लगेगा? 180 मिनट्स. लेकिन ये जो एक साइकिल 30 मिनट्स की है, तो लास्ट साइकिल के लास्ट के 10 मिनट्स क्यों काउंट करोगे? वो तो क्लीनिंग का टाइम है ना, मेकिंग का टाइम तो है नहीं. तो वो 10 मिनट इंक्लूड करके हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं. हमारा काम तो इसी 20 मिनट में हो गया था ना. 5 साइकिल और 20 मिनट में मेरा काम हो गया था. दैट मीन 170 मिनट्स में तो मेरा काम हो चुका था. बाकी के 10 मिनट तो क्लीनिंग के थे, तो वो मैं क्यों काउंट करूंगा अपने लिए? मेरा काम तो बनाना है ना, मैंने बना लिया 170 मिनट में. ठीक है. क्लियर? हम्म. All right, let's move. Try this one. Give me 2 minutes, I'll be back.
All right, perfect, guys. Good. All of you are right. All of you are right. Perfect. Good. Perfect, guys. So what do we have? There are three small pumps and a large pump who are filling a tank. Now, each of these three small pumps work at 2/3 the rate of large pump. So let's say the large pump does 3x units, and every small pump, it does 2x unit in that case, right? And now you have three small pumps. So the total work you are doing from these small pumps is 6x. That means the total amount of work that you are actually doing is 9x units, right? So if the total work done is 9x units, the time taken by all of them, like together, they are doing 9x units, and the total work is 9x units. So all will take how much time? 9x by 9x, that is, let's say 1 hour. ठीक है, अब hour में represent करो, minute में represent करो, doesn't really matter. And the large pump has to do 9x alone. It is doing 3x per hour. Let's say we are talking about hours. So in 1 hour, it is doing 3x. How much time will it take? 3 hours. So what fraction of time will it take to fill the tank if all four pumps are working as compared to large pipe alone? So large pipe alone is doing in 3 hours. They all of them together are doing in 1 hour. That means they are taking 1/3 of the time, and that is why option number B will be my right answer. Clear है? Clear है? 2/3 नहीं होगा जैन. जैन क्वेश्चन क्या है? What fraction of the time will they take to fill the tank as compared to time taken by large? So 3 में वो कर रहा है, 1 में ये कर रहा है, तो 1/3 of the time they are taking, right? ठीक है? ऑल 4 की बात कर रहे हैं ना, ऑल 4 के कंपैरिजन में ऑल 4 को ले रहा है. स्मॉल 3 ही है, एक लार्ज है, तो 4 की जो बात कर रहा है वो ऑल 4 की बात कर रहा है. ऑल 3 स्मॉल प्लस 1 लार्ज की बात कर रहा है. अभी क्लियर है जयंत? कंफ्यूज हो रहा है तू छोटा सा? वो जयंत देख, हाँ समझा? ठीक है, क्लियर. चले आगे. चल, ऑलराइट, सॉल्व दिस. All right, all of you are right. All of you are right. Anshruti, right?
Last 1 minute. Mansi, right? Aman, wrong. Kanchan, right? रोहन नहीं बेटा, गलत है. Just a second. हाँ, गलत है रोहन. भानु, wrong. Jayant, wrong. All right, let's see what we get. So it takes 6 technicians a total of 10 hours to build a new server from direct computer. Okay. So let's say one technician does 1 unit in an hour, right? So 6 technicians will do 6 units in 1 hour. And in 10 hours, the total work that they are going to do is 60 units, right? Total work they are going to do is 60 units. Now with each, because we have been given, they are working with the same rate. Now, if 6 technicians start to build the server at 11 a.m. and 1 technician per hour is added beginning at 5 p.m. So that means 6 technicians are working 6 units in every hour. From 11 to 5, all of them are working. That means for 6 hours, all of them are working. That means together they have completed 36 units, right? How much is left? 24 units, right? Now from 5 to 6 p.m., how much work will be done? 7 units will be done because 1 person has been added. So 7 units will be done. How much is left? Left over is 17 units. From 6 to 7 p.m., 8 units will be done. That means their pending work is only 9 units. And from 7 p.m. to 8 p.m., 9 units will be done and the entire work would be completed. That means at what time is the work getting completed? 8 p.m. Option number D becomes right answer. Right? Clear है? Clear है? How many of you like 8 p.m.? Anyone who likes 8 p.m.? Shekhar writes. Rohan likes. Devesh doesn't like. Good, 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 good. For those who did not understand, noobs. Chalo, let's move to the next. Nagraj is asking for what dinner? तू इतना सीधा नहीं है नागराज, तू इतना सीधा नहीं है बे. चल. चलो, solve it. Me? No, never. ये क्या होता है? इतना अंग्रेजी नहीं आती जेंट्स मेरे को. अच्छा अच्छा. ओह ओके. इडियट. मानो परफेक्ट. आदित्य रॉन्ग बेटा. किया परफेक्ट बेटा.
वो शो ऑल 3 का इंडिविजुअल सेपरेटली. Raj perfect. Aditya perfect beta. Last 2 minutes. Osho wrong. Jayant perfect beta. Last 1 minute guys. शुभम नहीं बेटा, गलत है. साकेत नहीं बेटा, गलत है. अरे शुभम, एक बात बता यार. थोड़ा सा ना इसको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी. क्या बोलते हैं, थोड़ा सा उठने उठने में इसको दिक्कत हो रही थी. कल मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोलता है कि जो है ये क्या बोलते हैं, टाइल्स है पूरे घर में, हर जगह छत वत पे हर जगह टाइल है, जिस वजह से इसको जो है दिक्कत हो रही है. इसके पैरों में अब दर्द हो रहा है, जॉइंट्स में, तो कुछ स्लिप होता ज्यादा है ना, दिक्कत. तो हाउस स्लिप होता है ना, तो इसलिए हाँ, तो पैरों में डॉक्टर ने दिक्कत हो बोला जाती है। है कि जो है इसको सुबह शाम 2-2 3-3 घंटे बाहर गार्डन में रखो, तब जाके कुछ ठीक होगा. ठीक हो जाएगा ना. हाँ हाँ सर, टाइल्स पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बेचारा तो बहुत जाके दर्द स्लिप में होते है, रहते हैं ना। बहुत तकलीफ में है बेचारा. अच्छा नहीं लग रहा है. सुबह शाम अब भेज तो रहा हूँ, कल भी भेजा था, आज भी सुबह भेजा था, शाम को भी निकालूंगा इनकी बाहर इनकी जाके. सॉक्स भी आती है ऐसे तो अच्छा आने की, सॉक्स लेकिन का. हाँ, हाँ, कुछ मदद बट ये, होती है उससे. हाँ होती तो है, बट वो डिपेंड करता है निकाल के फेंकने से। वो भी है. तो कारपेट वारपेट भी अभी रूम में बिछा दिया है कि जितने देर बैठा भी रहेगा कारपेट पे बैठे, थोड़ा सा वो भी थोड़ा तो रफ हो. टेंशन हो गया यार. ऐसे एकदम. दिवाली में प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, बेचारा एकदम मतलब कूदता फांदता रहता है इधर, 2-3 दिन से एकदम चुपचाप बैठा हुआ, उठने का भी उसका मन नहीं कर रहा, उसको दर्द हो रहा है उठ रहा है दर्द हो रहा हो, तो अच्छा नहीं लग रहा है देख के उस बेचारे को. ज्यादा मत घुमाओ ऐसे घर में फिर स्लिपरी पे। घर में अब इनको जो है बांध के ही मैं रखूंगा. इनको मैं बाहर सुबह शाम दो, जब बारिश नहीं होगा यार, बढ़िया मौसम रहेगा ठंडा थोड़ा, बाहर कर दूंगा. जाओ भैया बाहर रहो, गार्डन में खेलो कूदो. चलो, let's see what do we have. To do a certain work, C alone takes twice as long as A and B together. A would take 3 times as long as B and C together. All three together complete the work in 5 days. How long would it take separately to complete the work? So let's say guys that the total work is 5 units. Let's assume the total work is 5 units. From this we get ki bhai together, now because 5 units in 5 days, so 1 unit in 1 day, so together these people are doing 1 unit in 1 day, right? So A plus B plus C I know is 1 unit. Now it is telling me that C alone takes twice as long as A and B together. So C agar twice as long leta hai, so the amount of work that he is doing is half of A plus B. So I can say the work done by C is A plus B ka half.
So I can say that a plus b is equal to twice of c. Now substituting it into this equation, I get 2a plus b is 2c, c is c, together they are doing 1 unit. So 3c is equal to 1 unit, so c turns out to be doing 0.33 units, right? Similarly, it has been said a takes 3 times as long. So अगर वो 3 times as long ले रहा है, so he is doing 1/3 of the work. That means a is doing b plus c by 3. So b plus c is equal to 3a. Now substituting over here in this equation, what do I get? A plus 3a is equal to 1. So 4a is equal to 1. A is equal to 0.25. And now I know that a plus b plus c can do 1 unit. I know a can do 0.25, b can do 0.3, c can do 0.33. So b alone can do 0.4166 units, right? So I know the total work that they are able to do in one single day. अब तो तीनों का इंडिविजुअल निकालना है, so total work is 5 units. So A will take how much time? 20 days. 20 days. B will take 12 days and C will take 5 by 0.33, that is 15 days. That means 20, 12 and 15 is going to be my correct answer. Clear है? एक मिनट क्या guys, clear है बाकियों को? How many of you have a doubt? हाँ शेखर बता. भैया ये वाले क्वेश्चन को मैं हमेशा 1/A 1/B से ट्राई करता हूँ, बहुत टाइम वो लगता कोई है। इशू नहीं है, वो कोई इशू नहीं है, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट. मैं पर्सनली मतलब जो है प्रेफर करता हूँ ये एलसीएम और यूनिटरी मेथड से. ठीक है, बाकी जो तू कर रहा है उसमें कोई इशू नहीं है ना. नहीं भैया, मेरे को एक बार और ये वाला प्रोसेस समझा दो, इसी से करूंगा मैं मैं ये आपसे। वो समझा दे रहा हूँ मैं, वो कोई इशू नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर ये ना भी समझ में आए ना तो जाकर के मेरी क्लास देखना, है ना. क्योंकि दो तरीके होते हैं, एक तो वो रेसिप्रोकल वाला और दूसरा होता है ये वाला. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रेसिप्रोकल में कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ, दैट इज व्हाई आई प्रेफर दिस एंड आई टीच दिस. ठीक है, तो जीरो से अगर कोई ये चीज समझनी हो तो एक बार तू क्लास भी देख लेना. ठीक है, ये इस वाले क्वेश्चन टाइप में ना मेरे को टोटल वर्क लेने में प्रॉब्लम हो जाता है। टोटल वो कुछ भी ले सकता है बेटा. मैंने 5 लिया ताकि मेरे पास जो है वैल्यूज अच्छी आए, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी एक यूनिट है. ठीक है, तू कुछ और लेना चाहता है कुछ भी ले सकता है, टोटल वर्क लेने से हमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है. ठीक है, टोटल वर्क से हमको कोई भी इंपैक्ट नहीं होता. ठीक है, तुझे 10 लेना है तू 10 ले ले, तो a प्लस बी प्लस सी 2 हो जाएगा. तो यहाँ पे बस जो है 2c प्लस सी की वैल्यू 2 हो जाती. तो टोटल वर्क इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी प्रॉब्लम टू, राइट? ओके भैया। ठीक है, टीटा क्वेश्चन में सीक्वेंस चेंज हुआ तो आंसर गलत होगा. ये टीटा क्वेश्चन में आएगा ही नहीं, वो तो मैं कमीना हूं ना, मैंने टीटा में डाल दिया इसको. मैं क्यों दूं ऑप्शन तुमको आसान बनाने के लिए? मेरा काम तो चीजें कठिन करना है ना, है इसलिए. तीक्षिका, मेरे को भी रेसिप्रोकल मेथड से मैं बहुत वो नहीं हूँ, क्या बोलता हूँ, यूज टू भी नहीं हूँ, मैं कभी करता भी नहीं हूँ, तो मैं प्रॉपर नहीं बता पाऊंगा, मैं गलती कर सकता हूँ उसमें. ठीक है, ये मेथड मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना. देख, और किया तेरा भी डाउट था जैन, फ्रैक्शन से जो तू, फ्रैक्शन से मतलब कौन, वही रेसिप्रोकल वाले की बात कर रहा है ना जैन तू? हाँ, तो वो कोई इशू नहीं है, उससे कर सकते हो. डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद. ठीक है, एवरी क्वेश्चन कैन बी डन इन दिस वे एंड दैट वे. All the questions can be done in both the ways. That totally depends on what you are comfortable with. ठीक है, मैं इससे ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ थोड़ा सा यूनिटरी मेथड. यूनिटरी वैसे ही आसान चीज हो जाती है, एंड दैट इज व्हाई आई गो बाय दिस. ठीक है, इसमें मैंने क्या किया गाइस, क्योंकि 5 दिन में वो काम कर रहे हैं, तो मुझे लाना था कि तीनों मिलकर के एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं, तो आई अज्यूम दैट माय टोटल वर्क इज 5 यूनिट्स. सो इफ टोटल वर्क इज 5 यूनिट्स इन 5 days they are doing, so every single day they will be doing 1 unit. ठीक है, तो इफ दे आर डूइंग 1 यूनिट इन एवरी सिंगल डे एंड इट हैज बीन गिवन दैट सी जो है उनसे डबल टाइम लेता है, तो अगर यार, अगर मान ले हमें कोई काम करना है, मान ले हमें 10 पन्ने रीड करना है, मैं एक दिन में रीड करता हूं, तू 2 दिन में रीड करता है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं तेरा टाइम डबल ले रहा हूं तो मेरी एफिशिएंसी तेरा हाफ हो जाएगी. सो सी अगर डबल टाइम ले रहा है तो उसकी एफिशिएंसी बाकी दोनों से हाफ हो जाएगी. तो बाकी दोनों की एफिशिएंसी a प्लस बी है, उसका हाफ किया तो वो सी की एफिशिएंसी के इक्वल है. वहां से इक्वेशन बनाई, सी की जो है निकाल लिया, सी का पर डे का वर्क कितना है. सेम वे में ए के लिए निकाला, ए और सी निकल गया, तो ए बी सी की वैल्यू हमको 1 पता थी, ए और सी पता चल गया तो बी निकल गया. जब तीनों हमको मिल गए इंडिविजुअली पर डे कितना काम करते हैं, टोटल वर्क से डिवाइड करके निकाल लिया कि इंडिविजुअली कितना टाइम लेंगे. क्या अभी क्लियर है बेटा? एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस?
शेखर तेरे को भी क्लियर है बेटा? ठीक, लेट्स मूव अहेड, सॉल्व दिस. भानु राइट. वैभव लक्ष्य राइट, वेंकट रॉन्ग, नागराज राइट, किया राइट, अंशुति रॉन्ग. अंशुति क्या बेवकूफी कर रही है? आंसर निकाल के. कंचन रॉन्ग, अंशुति राइट, अमन राइट, आदित्य रॉन्ग, शेखर रॉन्ग, दीक्षा राइट, रोहन राइट, ओशो रॉन्ग, तिक्षिका रॉन्ग, शुभम रॉन्ग, वैभव रॉन्ग, स्नेहा राइट, वैभव राइट, स्नेहा रॉन्ग, शेखर राइट. Raj right, last 1 minute. थोड़ी स्पीड बढ़ाओ. Nikita right, Kanchan right. All right. So what we have been given over here is that X is 3 times as fast as Y and is able to complete the work in 40 days less than Y. So let's say that Y can do 1 unit in a day. In that case, X is able to do 3 units in a day. Let's say the days taken by Y is X नहीं लेते हैं, A ले लेते हैं. In that case, the days taken by X are A minus 40. But total work for both of them is the same. So X is doing 3 units per day for A minus 40 days and Y is doing 1 unit per day for A days. Total work is same in both the cases. So 3A minus 40 is equal to A, or 2A is equal to 20, right? Sorry, 2A is equal to 40 or A is equal to 20. Now find the time in which they can complete the work together. So that means total work that we have is what? कुछ गलती कर रहे हैं क्या अपन? अच्छा, हाँ, 120. 120. Okay, thanks guys. So what do I have? 2A is equal to 120 or A is equal to 60. That means total work I can say is 60 units. So if 60 units is the total work and together they can do 3 plus 1, 4 units in a day, how much time will they take together? They are only going to take 15 days. Clear hai? Clear? All right. Let's move ahead. Try this one.
Aditya right, Rohan wrong. Nagaraj wrong. Devesh right. Osho right. Venkat right, Jayant wrong. Saket wrong. Sneha right. Venu right. आदित्य आज देख मेरे पास 40 क्वेश्चंस है. वी आर ऑन 13th. 1 बजे 13th पे हैं हम. 1 बजे हम ब्रेक लेंगे. मान के चल हम 10 क्वेश्चन और कर लेंगे तो अराउंड 22 क्वेश्चंस हो जाएंगे. 30 तक क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा. बाकी 10 तो कैट के वो फटाफट हो जाएंगे. तो तू मान के चल 4 बजे तक खाली हो जाना चाहिए आज अपने को. 4 से 4:30 के बीच में वी शुड बी फ्री. अगले संडे मौत है. मान के चलो सुबह 10 बजे शुरू करेंगे एंड 7-8 तो बज ही जाएगा. सरोज रॉन्ग. कंचन रॉन्ग. ऑलराइट गाइस, व्हाट डू वी हैव? सो PQR टुगेदर टाइम स्पीड डिस्टेंस है. इसमें टाइम एंड वर्क में बहुत ज्यादा वैरायटी भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, तो इसलिए ज्यादा क्वेश्चन है नहीं. उसमें भी ऐसा नहीं उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है. उसमें भी हमारे पास 50 क्वेश्चन ही हैं आई बिलीव. नहीं, वो 50 क्वेश्चन करने में मौत आ जाएगी. प्रॉब्लम वो है. ओके सो पी मेंस के लिए ना लगा. अरे रोने लगेंगे ये सब. बहुत बहुत आराम पेपर पूछता है उसमें जो मेंस में जो है. देखा है मैंने एक आध बार. अरे बोलने को लोग बोलते हैं आदित्य कि बैंक पीओ का एग्जाम में जो बहुत आसान है. अरे प्री तक आसान है, जाके मेंस का रीजनिंग देखो. होश उड़ा देता है बड़े बड़ों का जो है. बहुत कठिन पूछते हैं, सब परेशान कर देते हैं. SBI दिया था, कैसा रहा? अलग लेवल पे होता है जो एकदम मौत आ जाती है. सूरज है अपना, VRC फैकल्टी है, तो उसका निकला था मेंस. वो इंटरव्यू में गया था. इंटरव्यू में गया तो बोल के आया कि मैं तो कैटवे चलाता हूँ. तो बोला जाओ वही काम करो, यहाँ कहाँ रहो, बैंक में काम करो. भगा दिए सब उसको. लेकिन उसका मेंस निकल गया था जो है. चलो, सो PQR टुगेदर कैन कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क इन 2 days. तो भाई लेट्स से कि they will complete the total work in 4 days. So 50% in 2 days, so 100% in 4 days. So that means let's assume that the total work that we have is 4 units, right? Now it has been said all three start together, but after 2 days Q leaves. Acha, also we know that PQR together in a day are doing 1 unit because 4 unit is the total work. 4 दिन में हो रहा है, तो in 1 day they are doing 1 unit. Now together these 3 people, they worked for 2 days, right? For 2 days they are working together. So in 2 days, they have done 2 units of work. How much is left? Left over is 2 units. Now it has been said P and R complete. P and R are left. P and R are remaining over here. Q has already left. They complete 1/6 of the work the next day. So that means on the third day, they complete 1/6 of the remaining नहीं बोला, of the total work they are बोल रहा है. So total work का 1/6 will be 0.66 units, right? So that means out of 2 units left, 0.66 units was done on day 3, right, by PNR. That means again the leftover work is 1.33 units. And these 1.33 units have been done by R alone in 8 days. So that means R every single day is able to do how much?
0.166 units R is doing in one day. Now P and R were able to do 0.66 units in a day. R is able to do 0.166 units in a day. That means P alone will do 0.5 units in a day. Now how much time will P alone take? Total work is 4 units. P is able to do 0.5 units in a day. That means P is going to take 8 days to complete the work. Clear है? अभी क्लियर है एवरीवन? सर ये P.5 कैसे आया है? देखो मेरे को क्या बोला था कि P और R ने मिलकर के एक दिन में 1/6 ऑफ द काम किया, तो P और R ने जो है 0.66 यूनिट्स दोनों ने मिलकर के किया। अब बचा था 1.33 यूनिट्स, वो बोल रहा है कि R ने 8 डेज में किया। तो अगर 8 डेज में किया तो R पर डे कितना काम करता है? इतना काम पर डे करता है। और P और R मिलकर के इतना करते हैं, उसमें से R को माइनस कर दिया तो P का अकेले का आ गया। ठीक, अभी क्लियर है? हाँ सर। Let's move ahead. Try this one. आदित्य परफेक्ट बेटा। लक्ष्य परफेक्ट, गुड। नागराज परफेक्ट बेटा। साकेत रॉन्ग, ओशो राइट, सिया रॉन्ग। अरे तुम में से कोई लॉयड स्टील में इन्वेस्ट कर रहा है? नहीं। देखना, थोड़ा नजर बना के रखना, बहुत तेज भाग रहा है इधर। ये रेवंत है क्या यहाँ पे? तो मैं बताता हूँ। अंशुति देवेश व्रज राइट, साकेत रॉन्ग। क्यों आदित्य? मतलब
आशुतोष रॉन्ग, दीक्षा राइट। ऐसा क्यों आदित्य? लास्ट 1 मिनट। नहीं तो मैं फ्यूचर ऑप्शन की बात नहीं कर रहा, मैं भी इक्विटी की बात कर रहा हूँ। वैसे ऐसा क्यों ऑफिशियल्स नहीं कर सकते एफएनओ? ऐसा क्यों होता है? कोई खास वजह? दिस इज समथिंग न्यू, आई डिडंट नो। Oh, okay, okay, okay. Pravesh Saket wrong, Ashutosh right. Alright guys, let's see what do we have. Sardaman, very good beta. So P works 25% more efficiently than Q and Q works 50% more efficiently than R. Okay. So let's say ki Q works 50% more efficiently than R. Okay. So let's say that Q I am taking as doing 8 units. Just a second. Devesh क्या message किया है? एक सेकंड देवेश, पढ़ ले मैसेज। हाँ आदित्य, तरीका तो वही होता है, तरीका तो वही होता है जो सरकारी ऑफिसेज में। अब जुगाड़ है भैया। मानसी रॉन्ग। ओके, सो लेट्स से Q does 8, let's say R does 8 units. In that case, Q will do 50% more than him, that is 12 units. And in that case, P will be doing 25% more than Q, that is 15 units. Now it has been said to complete a certain work, P takes 50 days less than Q. So let's say that P takes, or you can say that Q takes 50 days more than P. Either ways. So let's say if P is doing the work in X days, in that case, Q will be doing the work in X plus 50 days. And we know the total work is same for both of them. So can I say that 15x is equal to 12 multiplied by x plus 50? Right? So 15x is equal to 12x plus 600. So 3x is equal to 600. X is equal to 200. Right? Or you can say the total work is going to be equal to 15 into 200. That is 3000 units is the total work that I have. Right? 3000 is the total work. Now the question is asking you, if P works for 60 days and then Q works for 125 days, in how many days can R alone complete the remaining work? So it is saying that 15 into 60 for P and then 12 into 125 for Q. So this is going to be 900 plus 1500. That means 2400 units have been done by these two people out of 3000. The remaining work is 600 units and R can do 8 units in a day. So R is going to take how many days? 75 more days to complete the remaining work. Clear? Clear hai? All right. Let's move to the next. Try this one. 300 कर दिया था गधा। कब सुधरेगा तू? नागराज भाऊ, आपको तो मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपने मेरे जीवन को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया खुशी के मामलों में। यही अपना अकाउंट देके ही। सो मच फन ब्रो। टुडे इज फ्रेंडशिप डे। भगवान जाने, इतना चोचलेबाजी में पाला ही नहीं कभी।
लक्ष्य राइट, गुड। लक्ष्य आज तेरे को क्या हो गया है? ऐसे अच्छा नहीं लगता है तू सारे सारे आंसर सही देते हुए मुझे अब। नॉट गुड लक्ष्य। मेरे दो चार आंसर बीच में आपने बोले ही नहीं, मैंने आपको भेजा भी था। तेरे सही थे? हाँ सही थे। तो फिर क्या ड्रामे कर रहा है? कसम से। अरे तो नहीं बोले होंगे, भूल गया होगा गधे। अरे एक बार में ना जब कई लोग भेज देते हैं तो फटाफट ऊपर चला जाता है, तो उसमें मिस हो जाता है। दोबारा भेज दिया कर, कोई वो नहीं। भानु रॉन्ग, ओशो एंड रोहन राइट, किया राइट। तो मैं और बड़ी कर लेता हूँ। लेकिन तुझे आज हुआ क्या है, तू मुझे ये बता। है बोल अभी भाई। अंडरग्राउंड चल रहा हूँ ना। हाँ, अभी अंडरग्राउंड चल रहा हूँ ना। अंडरग्राउंड चल रहा हूँ। अरे कहीं नहीं कर रहा मैं, अभी कुछ नहीं चला रहा, बस काम कर रहा हूँ। ओशो, किया, शेखर राइट, अमन नागराज रॉन्ग। नागराज नागराज नागों का देवता है वो, समझे। व्रज एंड शुभम राइट, सरदवन राइट। ए नागराज को कोई कुछ नहीं बोलेगा, नागराज इज माय ब्रो नाउ। ओके, आई कैन किल फॉर नागराज। कंचन राइट। नागराज ने जो मुझे दिया है ना, यू गाइस वोंट अंडरस्टैंड। जयंत राइट। अरे भाई नागराज मजाक नहीं। ये देख, मुझे अपनी स्किल्स दिखानी थी। देख कैसे छक्के मार रहा हूँ मैं, मजा आ गया है खेल के। मजा आ गया भाई। ऐसे कंप्यूटर के सामने खेल खेल के लगता था साला जो है पता नहीं कैसा खेलूंगा। अब खेल रहा हूँ, अब मजा आ रहा है, अब तोड़ रहा हूँ अच्छे से। भानु रॉन्ग। बस अभी बीच बीच में मैं मैच तो मैं सारे हार जा रहा हूँ, क्योंकि बीच में मैं एक दो ओवर खाली बैट पकड़ के खड़ा रह जा रहा हूँ जो है। लेकिन और आग लगा। मैं चाह तू नहीं खेल पा रहा, मैं तो यूटिलाइज करूँ। आई ट्राई फीफा शाम को। फीफा इज द नेक्स्ट लेवल फन। कोई तो खेलता होगा वैसे। ग्राउंड पे एक जगह कहाँ मिला जाएगा कि ग्राउंड पे एक साथ मैच खेला जाए। मेरे को खेलने में बहुत मजा आता है क्रिकेट। ग्राउंड पे भी क्रिकेट एंड बैडमिंटन आर टू गेम्स दैट आई लव। आई लव क्रिकेट एंड बैडमिंटन। अक्षत रॉन्ग, देवेश राइट। फुटबॉल आई कैनॉट प्ले। हाँ यार ग्राउंड पे लेकिन 11 बंदे नहीं होते, तो ग्राउंड कौन से हमारे क्रिकेट स्टेडियम होते हैं? टर्फ पे खेले हो मतलब? अब वो जो आजकल नया नया चला है वो वाला, वैभव, समझ रहे हैं ना? वो जो एक, हाँ वो बॉक्स क्रिकेट वो वैसे करके जो है, नहीं यार वो खेला नहीं। तुम लोग वो सब खेलने की बात करते हो, मैं सोचता हूँ उसी का धंधा चालू किया जाए। भाई क्या मस्त कमाई है उसमें। टर्फ पता है ये क्रिकेट के टर्म्स में क्या टर्फ की बात कर रहे हैं, मैं समझ नहीं रहा। खर्चा बहुत है, क्या खर्चा है भाई, कौन मेंटेनेंस का कॉस्ट है? हम्म, आशुतोष राम, बिल्कुल खोलेंगे यार, कोई मेरे साथ ये सब धंधे कराने को तैयार हो जाए। पैसे नहीं है मेरे पास, नहीं तो दिमाग तो मैं बहुत लगा लेता। All right, let's see what do we have. So PQR takes 7, 12, and 14 days respectively to complete a job working alone. All right, so that means the total work would be WWE। क्या चाह रहा है, पिट पिट के आ जाऊं मैं? पढ़ाएगा कौन तुम लोगों को? हाँ, किसी ने मेरे इतने खूबसूरत चेहरे के वो बदल दिए तो, हुलिया बदल दिया तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। आई वोंट लाइक इट। So the LCM of 7, 12, and 14 would give you the total work. That means 84 units I'm assuming to be my total work, right? This is my total work. In that case, I can say that P is doing 14 units a day, Q is doing 7 units a day, and R is doing 6 units a day, right? So I know the individual work efficiencies of them, all of them, 7, 12, 12 units. Okay? Now the question is, with the help of S, they can complete the work in 2 days. So 84 units they are able to do in 2 days. That means every single day, all 4 of them together are able to do 42 units. So 42 is equal to P plus Q plus R plus S. And 42 is equal to 12 plus 7 plus 6 plus S. That means S turns out to be doing 17 units per day, right? Now the question is, find S ka total share out of 4200 rupees paid to them, right?
So together PQR are doing 25 units, right? Acha, jo money is to be divided, that will be divided into the exact same ratio of the total work that they are doing. So ratio would be 15x is to 17x between PQR and S. क्योंकि हमको तो S का निकालना है, we can combine all these people, right? So PQR is 25x, X is 17x. So total 42x, and this is equal to 4200. So X is equal to 100. So S will get how much? S will get 1700 rupees. Clear है? चुप रह किया हक. Clear है अभी? Guys, clear है? Correct था मानसी? Sorry. Apologies. 17 by 84. चलो. All right. Solve this. ओए म्यूट कर ले. आदित्य रॉन्ग बेटा, कुछ कैलकुलेशन एरर किया है तूने. हर चीज तेरा जो है 1.5 से मल्टीप्लाई हो गया है. डेफिनेटली अ कैलकुलेशन एरर. एस रिड्यूस हो गया है, बाकी सब 1.5 से मल्टीप्लाई हो गया है. How much time will they individually take to complete the work? Osho wrong beta. Diksha wrong.
Aditya, wrong. Sneha, wrong. Devesh, wrong. Someone please solve it right. Last 2 minutes, last 3 minutes, take 3 more minutes and solve. Shubham, wrong. Nagraj, absolutely right. Well done. Venkat, wrong. Last 1 minute, guys. Sardaman, wrong. Why are all of you getting the same answer? 6, 12, 3, 18. That's the wrong one, guys. 6, 12 वाला जो लोग बोल रहे हो. That's the wrong one. Last 30 seconds. फटाफट बताओ किसी का बाकी रह गया हो तो. Type it if you want to. One o'clock I'll be giving the break. All right, guys. सरदमन नहीं बेटा, गलत है. All right, guys, let's see what do we have. So we have been given that R takes 5 times the time taken by P to complete a work. Okay, P takes half the time taken by Q to do the same work. S takes 20% more time than R to complete the work. Okay, so let's say we have P, Q, R, S. Let's talk about the time taken. So time, let's say taken by P is X time. Now R takes 5 times the time taken by him. S takes 20% more than R, and P takes half of Q, or Q takes double of P. That means this, right? So for all of them, we know the time that they have taken to complete the work, right? Now, when the time is known, can we calculate the total work? Yes, the LCM is 30x. So can I say that for about the efficiency that P works 30 units, Q works 15 units, R works 6 units, and S works 5 units? Up till here, is it clear to everyone? Up till here, is it clear to everyone? All right. Now it is saying that Q does 5 by 16 of the work. So out of the 30x work, Q is doing 5 by 16. And what if he is doing this much amount of work he is doing, and Q in one day is able to do 15 units. So this is the time that he will take. Now R is doing 1 by 4.
That means 30x into 1 by 4, and he is doing 6 units per day, right? Then you have S, who is doing 3 by 16 of 30x, and he is doing 5 units per day. How much is the remaining work, guys? By 30x में से 5 by 16 and 3 by 16, that is 50% is gone. 50% के बाद another 25% is gone. So how much is left? 25% of the work is left, right? So P will have to do 30x ka 1 by 4 with the efficiency of 30 units. Now together this was the complete work in 13 days. So इस तरीके से they have done the work. And how many days have they taken? They have taken 13 days to complete the work. Solve it. अब मैं इसको solve करके direct values लिख रहा हूँ, ठीक है, in decimal. So 0.625x plus 1.25x plus 1.125x plus 0.25x is equal to 13. 3.25x is equal to 4, is equal to 13, and x becomes equal to 4. So now when your x is equal to 4, the question is how much time will they individually take? So P will take 4, Q will take 2x 8, R will take 5x 20, S will take 6x 24. This is the correct answer. Clear hai? Everyone? भैया ये डिवाइड कर रहे हो ना आप, डिवाइड बाय 15, डिवाइड बाय 6, ये थोड़ा जाना एक बार। ये मेरा वर्क है भाई। अगर मेरे को 5/6 वर्क करना है तो 30x का 5/16 में निकालूंगा, तो ये तो टोटल वर्क जो मेरे को करना है वो निकला। अब वो काम करने में मेरे को दिन कितने लगे, एफिशिएंसी से डिवाइड करेगा ना, तभी तो निकलेंगे दिन। ये सारा डेज का सम है ना, समझा? ये 15x नहीं होगा? x क्यों होगा? x क्यों होगा? टोटल वर्क 30x था, p x डेज में करता है तो 30x बाय x 30 हो गया। ये सारे तो इंडिविजुअल, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज आ गई ना। ठीक है ठीक है। आदित्य कौन सा? ये वाला भाई 5/16 प्लस 3/16 मतलब 8/16। तो इन दोनों ने मिलकर के 50% काम कर दिया, इसने और 25% काम कर दिया, तो बचा कितना? 25% काम। तो वो जो है अपने पी भाई को करना है। किसको करना है? हाँ, पी भाई को करना है। क्लियर है? एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस? बोलो भाई लोग, एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस? ओके, लेट्स मूव अहेड, सॉल्व दिस। आदित्य परफेक्ट। ओशो परफेक्ट। नेहा परफेक्ट। अमन, कंचन, रोहन परफेक्ट।
हाँ ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं. देवेश परफेक्ट, किया रॉन्ग, शेखर रॉन्ग, रोहन परफेक्ट, शुभम रॉन्ग. वही जिसका जिसका मिस हो जाया करे ना दोबारा भेज दिया, क्योंकि एक साथ कई लोग भेज रहे हैं ना, तो उसमें फटाक से ऊपर चला जाता है, मेरे को भी नहीं दिखता है कि कब आया आंसर. मानसी राइट, प्रीता रॉन्ग, अंशुति राइट, शुभम राइट, हर्षा रॉन्ग, हर्षा तू खाली चैट बॉक्स में सही आंसर देगी हैं व्हाट्सएप पे. टीचिका रॉन्ग बेटा. वंदना राइट, जयंत बताऊं अभी, शेखर राइट, जयंत नहीं बेटा, अब बताऊं. चलो ओके. So guys, what do we have in a tank? There is a leak which can empty the tank in 20 hours at 3 by 4 of the height from the base. Okay, so the leak is at 3 by 4 of the height from the base. Okay, okay. So there are two filling pipes which can fill the tank in 6 and 12 hours respectively. So let's take the LCM of 6, 12 and 20 to arrive at our total work, right? This is my total work, correct? So that means this over here entirely is 60 units, and 3 by 4 height, let's say over here, this much work is 45 units in that case, right? Whole is over here. Now the question is, key, okay, now let's talk about the individual ones. Okay, so filling one, that can fill it in 6 hours, 60 units. So in per hour, it is doing 10 units. Filling 2 can fill it in 12 hours. That means every hour it is doing 5 units. And empty wala can fill it in, empty it in 20 hours. That means every hour empty wala is doing -3 units. Now the question is, how much time will it take to fill the tank if all pipes are opened simultaneously? Now the leakage will come into picture only after the first 45 units have been done. For the first 45 units, there is no leakage. So these 45 units will be done by the filling pipes at the rate of 15 per minute per hour. That is, they will take 3 hours to fill 45 units. Now the remaining 15 units which is left will be done by 10 plus 5, 15 minus 3, that is 12 units per hour. That means they will take 1.25 hours. So the total time taken would be 3 plus 1, 4.25 hours, and that will be the correct answer. Clear hai? Everyone is clear on this? All right. Clear hai? Chalo, let's move. Try this one.
सॉरी, नहीं हाँ आदित्य परफेक्ट बेटा, एब्सोल्युटली राइट. यू आर रॉन्ग. नहीं शेखर गलत है बेटा. यू आर रॉन्ग. स्नेहा रॉन्ग. स्नेहा ओके, विल वेट. स्नेहा थोड़ा सा और सोच बेटा. हाँ हाँ आदित्य तेरा सही है. देवेश तेरा भी सही है बेटा. वेंकट रॉन्ग. लास्ट 2 minutes आई एम गिविंग यू गाइस. नागराज परफेक्ट बेटा. लास्ट 2 minutes. वेंकट राइट. लक्ष्य लक्ष्य राइट. लक्ष्य आज कुछ तो हुआ है तुझे सुबह सुबह डांट खा के. तबीयत ठीक है ना बेटा? हैं लक्ष्य? गुड. आज बहुत खुश हूं मैं तेरे से. दैट इज डिफरेंट लक्ष्य. गाली देना इज कांस्टेंट. खुश होना इज टेम्परेरी तुमसे. नहीं स्नेहा गलत है. फ्रेंड जोन हो गया होगा. क्या लक्ष्य फ्रेंड जोन होके आ रहा है क्या? वंदना राइट. लास्ट 30 seconds. सिस्टम बना रहना चाहिए. क्या बोलता है वो? दबाव बना रहना. क्या दबाव बोलता है ना? दबाव बना रहना चाहिए. पिक्चर देखता है लौंडा. डायलॉग क्या है आदित्य? टेल मी द ओरिजिनल डायलॉग. दबाव बना रहना चाहिए. दबाव ही बोलता है. जब तक इस देश में सिनेमा है तब तक. समझ गए होगे? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर? ये क्या बोल रहा है बे? दबदबा. अच्छा दबदबा बना रहना चाहिए. ओके ओके ओके. दबाव नहीं दबदबा बना रहना चाहिए. ओके. वहां से तो व्हाट द मूवी. ओह देवेश भाई कौन सी मूवी का है? जब तक इस देश में सिनेमा है कि दबदबा बना रहना चाहिए.
क्या हिंदी कमजोर है बे मेरी? मेरी हिंदी हिंदी अंग्रेजी सब कमजोर है, देखो मुझे मैथ्स आता है, पॉइंट में नहीं आएगा। दूसरा ये गैंग्स ऑफ वासेपुर का है ये, जब तक इस देश में सिनेमा है। If I know too many languages, what will I be called? Tell me. What will I be called if I know too many languages? Finest linguistic. Okay. Too much English. समझदार. Yes, that was good. Bilingual. Bilingual तो दो भाषाएं हुआ ना. बाई मतलब तो दो होता है ना. मतलब मुझे अगर मैं गलत हूं तो माफ कर देना, हंसना नहीं. बाई मीन्स टू ना. बाइलिंगुअल मतलब दो भाषाएं जानने वाला. इफ आई नो मेनी. पॉलीग्लॉट. भाई तेरे को किया इतना अंग्रेजी आती है सच में? ये कहाँ से सीखा बे? पॉलीग्लॉट तो बहुत भारी वर्ड है. मल्टीलिंगुअल ये बढ़िया है. शुभम बहुत आलसी है भाई तू तो. मल्टीलिंगुअल. गूगल तो मैं भी कर दिया था. अच्छा सब लोग हम लोग जैसे नहीं होते. ट्रू लैंग्वेज. पॉलीलिंगुअल. अरे साला कोई मल्टी बोल रहा है, कोई पॉली बोल रहा है. भाई साहब तुम लोग तो गजब जो है अंग्रेजी के वो भाई. चलो सो एज वी डिड द प्रीवियस वन, वही चीज अभी भी अपन करेंगे. ठीक है. सो इन 1 hour they are able to do 1 unit, right? In 1 hour these people are able to do 1 unit. अभी थोड़ी देर पहले किया था ना. कहां पे किया था? कहीं पे किया था ये वाला, right? So in 1 hour I assume them to be doing 1 unit. So over here as well I am assuming them to be doing 1 unit. Now it has been given that 6 times the time taken by A. Now what will be the time taken by A? तो भाई ओके 1 unit अगर वो कर रहा है 6 times the time taken by A, कैसे लिखा जाएगा यार? इसको कैसे डिनोट करेंगे भाई लोग? अगर A is 7 times the time taken by B and C together. Okay. So आई मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा है? कैसे रिप्रेजेंट करूंगा यार A का टाइम? एक काम करते हैं, रुको काम को आसान बनाते हैं. लेट्स से दिस इज द टोटल वर्क. सो इफ द टोटल वर्क, अच्छा हाँ करेक्ट, sorry, let's say the total work is 1 unit, right? So the time taken by A would be 1 by A. Let's say उनकी efficiency is ABC, so the time taken by A is 1 by A. ठीक है. तो 6 times of it is equal to 7 times the time taken by B and C together. So this is the equation that we are getting, correct? So now what do we have? That 7A is equal to 7A by 6 is equal to B plus C. And I know that A plus B plus C is equal to 1 unit, right? So if A plus B plus C is equal to 1 unit, and this is the equation that I have, I can replace B plus C by 7A plus 6. So A plus 7A by 6 is equal to 1, right? So from here I get 13A by 6 is equal to 1, or I get that A is equal to 6 by 13. Now 6 by 13 is what? Decimal में बताओ. 0.4615. That means A can do this much work. उसके बाद बोल रहा है 3 times the time taken by C. So C का time is 1 by C. 3 times of it is equal to 10 times the time taken by A and B, right? So A plus B can be written as 10C by 3, right? So A plus B को replace किया. So 10C by 3 plus C is equal to 1. 13C by 3 is equal to 1, or C is equal to 3 by 13. So my C becomes equal to 0.2307. Now A plus B plus C, up till here everyone is clear. वही बिल्कुल डिक्टो सेम प्रोसेस है जो इसके पहले किया था. बिल्कुल एब्सोल्युटली द सेम प्रोसेस. क्लियर है? तो सर इसमें हम रेसिप्रोकल लिख क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था. रेसिप्रोकल के समझ में नहीं आया. रेसिप्रोकल में होता बस क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो कि हम टोटल वर्क को अपना 1 यूनिट मान लेते हैं. ठीक है. तो जब हम टोटल वर्क को 1 यूनिट मानते हैं और हम एफिशिएंसीज को ABC जैसे हमने लिया है, तो A को कितना टाइम लगेगा भाई? 1 यूनिट काम करना है, और तो टाइम कितना लेगा? वो 1 बाय A लेगा, क्योंकि A उसकी एफिशिएंसी है. तो रेसिप्रोकल मेथड में बस ये होता है कि टाइम को हम जैसे हम लोग जो करते हैं. तो कौन है? अमन.
अमन, तो अमन हम क्या करते हैं, हम जो है ऐसी वैल्यू लेते हैं जो इजिली सॉल्वेबल होती है, रेसिप्रोकल में उसको 1 ले लिया जाता है, ठीक है। ठीक तो जब हम 1 ले लेते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव भाई, आपने को ए पता है और सी पता है, सो वी कैन कैलकुलेट दैट माय बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.3078 hours, 78 यूनिट, राइट। अच्छा, okay, so now the question is find the time taken by B alone to complete the work. नहीं, इसको एक सेकंड, आई एम गेटिंग कंफ्यूज, रुको। नो, this will be 1 hour only, this will be 1 hour, but 1 hour, just a second, why am I getting confused? एक मिनट रुकना, अगर मैं इसको, ठीक है, 1 घंटे में अगर मैं 1 यूनिट मानता हूँ, 6 times the time taken by A is 7 times the time taken by B and C together, correct? तो तो रेशियो इनवर्स हो जाएगी एफिशिएंसी की, जो टाइम a by b plus c 6/7 है तो 7/6 करके। कैसे होगा, एक बार लिखवाना मेरे को। मैं भी सोच रहा नहीं, मतलब यूजुअली होता है ना टाइम का वही जो होता है, रेशियो वही होगा, होता है, क्योंकि उसको लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं। तो वही लिखा है ना आपने, अगर 1/a और इंटू 6, अगर 7/b plus c है तो अच्छा अगर हाँ, वही चीज होगा, ठीक है। तो भाई देखो, मेरा 1 घंटे का काम, मेरा अगर 1 यूनिट है, ठीक है, तो बी इतना बी इतने यूनिट करता है, ठीक है, और टोटल टाइम मेरा 1 घंटे में 1 यूनिट हो रहा है, और टोटल टाइम मेरा कितना है, ये है टोटल टाइम कितना हो गया, 8/13 कितना होता है, फटाफट बताओ, मेरा कैलकुलेटर कहाँ है, 615, ठीक। सो द टोटल टाइम दैट आई हैव इज 4.615, करेक्ट। सो मेरा टोटल वर्क विल आल्सो बी 4.615, ठीक। और बी इतना काम करता है, तो 4.615 करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 0.3078 से बी इज गोइंग टू टेक 15 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब अलोन। क्लियर है, समझ में आया। ये टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये टाइप पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसके दो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए थे। क्लियर है, हाँ हाँ, ये रिकॉर्डिंग तो मिलेगा। All right, let's move to the next. Solve this. कोई नहीं जैन, किया राइट, द फर्स्ट वन वाज राइट, दोबारा जो तूने किया वो गलत है।
नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिक वही हो गया किया। अभी मैं समझाता हूँ। वर्क गॉट कंप्लीटेड होगा वैसे लास्ट में। Raj wrong, Lakshay wrong, Osho okay, Devesh wrong, Devesh wrong, Raj wrong, Ashutosh wrong, Aman wrong, Kanchan wrong. Oh, I know why you guys are going wrong. अभी मैं हाँ नहीं, ओशो तेरा थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है। किया ने एक बात बोली वो मैं सोच रहा हूँ, तो बस। लेकिन तेरा आंसर आई थिंक इज राइट। रोहन नहीं बेटा। ओशो भाई। टिचिका रॉन्ग। बताऊं मैं? प्रवेश रॉन्ग, रोहन ओके, वेंकट रॉन्ग। बताऊं गाइस? शुड आई टेल नाउ? Devesh wrong. Okay. So what do we have? PQR can do a piece of work in 4, 6, and 12 days respectively, working for 12 hours a day. Now on each day, P starts the work for 8 hours. So let's calculate the total work that we have. LCM of 4, 6, and 12. So the LCM is going to be 12. So we can say that P is able to do in 12 hours, P is able to do by 4 days mein wo kar pa raha hai, working 12 hours a day. So total work is 12 units, right? Total work is 12 units. So basically P can do every day 3 units. And these 3 units he is able to do in how much time? In 12 hours, right? He is doing those 3 units in 12 hours. So in every hour he is doing 0.25 units. And now they are working for 8 hours ka shift. So in 8 hours, P is going to do 2 units, right? Similarly, talk about Q. So Q will be doing 12 units in 6 days. That means 2 units every single day. Now 2 units in 12 hours he is doing. That means in 1 hour he is able to do 0.166 units. That means in 8 hours he'll be able to do 1.33 units, right? And similarly for R can do 12 units in 12 days. So he is able to do 1 unit in a day. 1 unit in 12 hours simply means 0.0833 units every single hour. And for 8 hours, if he continues the work, he will be able to do 0.66 units. Up till here, everyone is clear, I hope. I hope everyone is clear up till here. Sorted. अब क्या बोल रहा है कि on each day, P starts the work for 8 hours, then R works for 8 hours. In the same way, they continue till P leaves after 2 days of work. तो जो 2 days of work है, अब यहाँ पे 8 hours a day की बात नहीं हो रही है गाइस। वो क्या बोला? P 8 घंटे काम करेगा, फिर R 8 घंटे काम करेगा, फिर P 8 घंटे काम करेगा. So technically we are talking about P will be doing for 8 hours. Next 8 hours Q will be doing. Next 8 hours P will be doing. Next 8 hours Q will be doing. Sorry, R. Next 8 hours again P will be doing. Next 8 hours R will be doing. Now 48 hours or basically 2 days are over. In 2 days, how much work has been done? So P was doing 2 units in 8 hours. So P has done 2 into 3 because 3 times he has done those 2 units. And R has been doing 0.66 units. So R has also done it 3 times. So the total work that they have already completed is 6 plus 2, that is 8 units they have already completed. Right? 8 units they have already completed. Now the amount of work that is left is basically 4 units.
And now Q and R work effectively for 8 hours, alternatively for 8 hours till the work is completed, right? So P chala gaya. Now again, now who will be starting? Q will be coming in and doing the work. So in the first 8 hours, he will be doing 1.33 units. In the next 8 hours, R will be doing 0.66 units. In the next 8 hours, क्या बोलते हैं, P will again, Q will again be doing 1.33 units. And in the next 8 hours, कितना हो गया? 1.33, 0.66 to 3.33. करेक्ट? 3.33 पे पहुंच गए. ठीक है, कुछ गलती तो नहीं कर रहा? सर वो पीआर तो 2 दिन काम कर रहे हैं ना? 2 दिन नहीं काम कर रहे, वही बात है. P starts the नहीं work मतलब for 8 तो 8 8 पी 16 6 8 8. हाँ भाई बोलो बोलो. P8 R8 फिर P8 फिर R8 ऐसे. P8 फिर R8 फिर P8 फिर R8 ऐसे. तो ये 2 दिन इसमें कंप्लीट नहीं हुआ. नहीं 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 नहीं. अब जो है वहां पे 12 आवर्स अ डे जो काम कर रहे थे, अब चीजें बदल गई हैं. वो 8 घंटे काम किया, स्टार्ट किया काम को करना, ठीक, 8 घंटे उसने काम किया, फिर आर आ गया, फिर उसने लगातार 8 घंटे काम किया. दिन अभी नहीं खत्म हुआ, ठीक है. अब अगले फिर 8 घंटे पी काम करेगा एंड देन 24 आवर्स हैव बीन कंप्लीटेड. वो डिफरेंस है यहाँ, ठीक है. इस वजह से तुम लोग का शायद 5.33 कुछ लोगों का आंसर आ रहा था. अभी समझ में आया क्या गड़बड़ हो रही थी? हाँ, लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है ना कि ऑन ईच डे पी स्टार्ट्स द वर्क फॉर 8 आवर्स एंड देन फॉर 8 आवर्स. उसके बाद ये भी तो बोला है कि इन द सेम वे दे कंटिन्यू टिल पी लीव्स आफ्टर 2 days. On each day, P start the works for 8 hours, then R works for 8 hours. In the same way, they continue till P leaves after 2 days. तो वो काम करते रहेंगे, उसी ऑर्डर में काम करते रहेंगे वैसे ही. सर इसमें 2 days ऑफ वर्क मींस 24 आवर्स नहीं होगा, क्योंकि 12 आवर्स अ डे है. नहीं, वो तो अलग चीज हो गई, वो कहानी ही खत्म 12 आवर्स वाली. अब हम 8 आवर्स के बेसिस पे देख रहे हैं. तो 8 घंटे करके जो है 3 साइकिल जब कंप्लीट होंगी इनकी, तब जाके तुम्हारे 24 आवर्स और 1 डे कंप्लीट होगा. समझे? 2 दिन तक इन्होंने लगातार इसी तरीके से काम करते चले गए साइकिल में ऑल्टरनेट. सर एक चीज पूछनी है, इस क्वेश्चन में ऐसे लिखा है और ईच डे पी स्टार्ट द वर्क. ठीक है, तो पहले दिन पी आर पी आया, फिर दूसरे दिन में पी आर पी तो आना चाहिए. एक सेकेंड. On each day, P starts the work for 8 hours and then R works for 8 hours. Good point. सर आई थिंक इसमें वैसे ही होगा कि एक दिन में, ये पॉइंट तो अच्छा है. एक दिन में 16 आवर्स वर्क होगा, एक बार पी करेगा एक बार आर वो करेगा. वो बोल ही नहीं रहा है, वो दूसरी चीज बोल रहा है. उस केस जो में बोल रहा है वो सोन सही लिखता बोल ना. रहा है. उस केस में कुछ एडिशनल लिखा रहता ना कि सो ऑन एंड सो ऑन या ऐसे करके कुछ, मतलब क्योंकि नया दिन हुआ तो चलो लेट्स डू इट इन वन में कि एवरीवन इज क्लियर विद द अप्रोच दैट शुड हैव बीन फॉलोड, राइट? थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है अगर तुम लोगों के लिए, थोड़ा सा. अभी जो इसने भी बात बोली उससे मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ. जो कौन था ये जिसने ये बोला पीआरपी फिर पीआरपी? अमन, बिल्कुल ठीक बात बोली है तूने, है ना. थोड़ा सा वहां पे बात तेरी सही बैठ रही है कि ऑन ईच डे बोला है तो हर दिन इसी तरीके से काम शुरू होना चाहिए. ठीक है, तो छोड़ देते हैं. प्रोसेस सबको क्लियर है, समझ में आया कॉन्सेप्चुअली क्या करना है, कैसे करना होता, राइट? लेट्स से थोड़ा और बेटर वे में इफ द क्वेश्चन वुड हैव बीन फ्रेम्ड, इन दैट केस एवरीवन मस्ट हैव बीन क्लियर कि क्या है अपना अप्रोच, राइट? उसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है अभी. सर बताओ. समझो अगर ये पी वो 12 छोड़ो, अब आवर्स डे. अभी उसको छोड़ो, मैं उस पर बहस अभी नहीं कर रहा. नहीं सर, मैं ठीक है, अप्रोच के बारे में ही बात कर रहा था. बोलो. कि समझो अगर आप पी का टोटल वर्क 48 यूनिट्स ले लिया और फिर हर एक का टोटल वर्क 48 यूनिट्स ले लिया और हर एक का एफिशिएंसी निकाला, तो वैसे भी कर सकते हैं ना? हाँ, टोटल वर्क कुछ भी ले ले. टोटल वर्क तूने 48 ले लिया, ठीक है, तो पी का हो जाएगा भाई 48 यूनिट वो 4 दिन में करता है, तो 12 यूनिट वो 1 दिन में करता है, ठीक. तो 1 घंटे में 1 यूनिट करता है, तो वो तो कोई इशू नहीं, वो तो सेम चीज वही हो गई. टोटल वर्क तो कुछ भी ले सकता है, उसमें कोई इशू तेरे को नहीं आने वाला, ठीक है. टोटल वर्क कैन बी 1, टोटल वर्क कैन बी 1 crore, टोटल वर्क कैन बी 445, टोटल वर्क कैन बी 537, एनीथिंग दैट यू वांट टू टेक,
क्लियर? ये चीज सॉर्टेड है. हाँ. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट. ठीक है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना इज मोर इंपॉर्टेंट देन इस क्वेश्चन का करेक्ट होना. सॉल्व दिस. आशुतोष तूने इसका नहीं, इसी का आंसर दिया आशुतोष, कुछ और बोला तूने? नहीं, वो मैं कुछ और इनपुट दे रहा अच्छा, था पिछले ठीक ठीक क्वेश्चन. ठीक 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 ठीक. क्या? हाँ. लक्ष्य रॉन्ग. अच्छा नहीं, लक्ष्य राइट, रोहन राइट, नागराज रॉन्ग. रोहन लास्ट वाले में कोई आंसर नहीं था बिकॉज थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू था, तो वो छोटा सा इशू पड़ रहा था. ओशो राइट, देवेश पूरे का बताना है. अमन राइट, किया राइट, श्रीता राइट, लास्ट 1 मिनट, कंचन राइट, देवेश राइट. लास्ट 30 seconds. अंशुति राइट, दीक्षिका रॉन्ग बेटा. हाँ, बिफोर द ब्रेक लास्ट क्वेश्चन. Okay, so we have been given that PQ can do it in these many days, QR in these many days, PR in these many days. So what we'll do is we'll take the LCM of the time taken, that is 12, 20 and 15, and that means 60 units is our total work, right? 60 units is the total work that we have. Now P plus Q are able to do how many units in a day? They are able to do 5 units. Q plus R are able to do 3 units in a day, and P plus R are able to do 4 units in a day, right? Adding them up, you get 2 of P plus Q plus R, you get as 5, 4, 9, 3, 12. So you get that P plus Q plus R are able to do 6 units together. Now, if P plus Q can do 5, R will be able to do 1. QR are able to do 3, so P will be able to do 3. And PR are able to do 4, so Q will be able to do 2. Now it has been given that they start working together and then after 2 days. So for 2 days they work together, that means 6 units they do for 2 days. Then Q leaves. That means who is remaining?
P and R are remaining. So together they are able to do 5 units, 4 units together. So they are working with 4 units for 10 days. And then Q rejoins and P has left. So Q and R are remaining. Q and R are able to do 3 units every single day for 2 days. So how much work have they done? They have done 12 plus 40 plus 6, that is 58 units. 2 units are left, right? Now R has to complete the remaining work. So he will take 2 days to complete 2 units. So in how many days was the work done? 2 days of here, 10 days of here, 12 days, 12 to 14 days, 14 to 16 days were taken to complete the entire work. Clear है? Remaining पूछता तो आंसर 2 हो जाता. Clear है अभी? Guys, is the question clear? All right. So let's take a 1 hour ka break. Let's meet at 2:15. Okay? Sorted? All right. So I'm pausing the recording. I'll be available here after. Let's start. Let's start, guys. So let's start with the second half. Here's the first question for you. Chalo, start solving. Lakshya wrong. Venu wrong.
Aditi wrong, Sardaman wrong. Aditi WhatsApp देख अपना. Rashi wrong, Shekhar wrong. Rohan close beta. Cross check कर. Shubham wrong. नहीं रोहन एग्जैक्ट आ रहा है. रोहन राइट. Saket wrong. Lakshya wrong. Pravesh wrong. Last 2 minutes. Anshita wrong. Diksha wrong. Anshita right. Shekhar wrong. Harsha wrong. Last 1 minute. Saket wrong. Aman wrong. Alright guys, let's see what do we have. 3 men ABC working together can do a work in 30 days. They start the work together and A works for 3 days, takes rest on fourth day. B works for 5 days and takes rest for next 2 days. C works for 7 days and takes rest for next 3 days. So basically it is saying that okay, acha, also if ABC work at the same rate, so let us assume that all 3 of them are working 1 unit each. So together, if they are working in a day, they are doing 3 units and they are doing the work for 30 days. That means the total work that we have is 90 units. Now for A, it is known that he does 3 units in 4 days. B does 5 units in 7 days, including the holidays we are talking about. And C does 7 units in 10 days. Right?
अब देखो इनका LCM लेकर के there is no point because it's going to be a very large value. We do not have to go up till that large value. So over here, a better approach is एक approximate से try to get close to the answer. ठीक है? So let's say if you want to try 35, let's talk about 35th day. So when 35 days are done, right, A will have how many cycles? 9 complete cycle on 36th day, right? And 9 complete cycles of A will be over on 36th day. That means, and on that 36th day, A will be having a off, right? So we can say that in 35 days, A will be doing 27 units of work. Similarly, B ka to entire cycle will end on 35. That is 5 cycles will be there. So 5 cycles and 25 units in every cycle will give you 25 units for him. Similarly, C will have, now see, in the first 30 days, C will do 21 units. And in the next 5 days, he will do another 26 units. So where have we arrived? We have arrived at a total work done of 78 units. Up till here, is it clear, guys? कि मैंने जब 35 unit माना, so this is the total work that has been done by the end of 35th day. Up till here, सबको clear है? Any doubts? सर ये वाला पार्ट एक बार फिर से रिपीट फिर से देख भाई, इसमें मैं अगर सोचूं कि यार एक LCM लेकर के देखा जाए या पैटर्न बेसिकली बनाया जाए, तो पैटर्न जब तक हम बनाएंगे तो बहुत कई 100 यूनिट काम कर लेंगे, तो पैटर्न तो मिलने से रहा. तो देन व्हाट वी विल डू इज वील ट्राई टू चेक फॉर डिफरेंट वैल्यूज. तो सबसे पहले मैंने चेक किया 35 डेज. तो 35 डेज में भाई एक साइकिल 4 दिन की है, तो एक ही साइकिल कब खत्म होगी? या ऐसे मत समझो तुम, मान लो एक ही साइकिल 8 साइकिल्स विल एंड इन 32 डेज. तो वो 8 साइकिल्स में 8 into 3 24 यूनिट काम करेगा. देन 33 34 35th डे को भी ए काम करने वाला है, तो ए ने किए 27 यूनिट्स. इसने जो है 7 डेज की, इसका एक साइकिल है तो 5 साइकिल हुई, 5 साइकिल मतलब 25 यूनिट्स. और इसकी 3 साइकिल्स हुई कंप्लीट, तो 3 साइकिल्स में 21 यूनिट्स और अनदर 5 डेज तो 26 यूनिट्स. टोटल वर्क हुआ 78 यूनिट्स. समझा आशुतोष? आशुतोष इसको क्या हो गया? गाइस एम आई ऑडिबल? ओके, इसका प्रॉब्लम है. चलो ठीक है. तो भाई up till 35th day I can see okay there's a 12 units of work left. So instead of, हाँ आशुतोष तू टाइप कर दे, तेरी आवाज नहीं आ रही. समझा कि नहीं समझा? अभी 35 days पे I see that okay I am still short of 12 units. What I'll do is I'll go and check the 40th day. So when I'm checking the 48th day, A will be ending his 10 cycles. So in 10 cycles, A will be doing 30 units, right? C will be completing his 4 cycles. In every cycle, he is doing 7 units. So in 4 cycles, he is going to do 28 units. Talk about this person. So in 35 days, he had completed 25 units. Now, again, for the next 5 days, he is going to work. So 36, 37, 38, 39, 40 also is going to work. So he will also complete what? 30 units. So at the end of 48th day, we are done with 88 units, right? Now come to the 41st day. 41st day pe, guys, A will be working, B will not be working, C will be working. So 2 units they will be doing together. So in how many days? Another 2 units will be done on 41st day. Total work done would be 90 units. That means we have completed the work, and hence in how many days will the work be completed? The work will be completed in 41 days. Clear है? एक hit and try से अपन गए कि 35 पे ट्राई किया, 40 पे ट्राई किया, and so how the cycles are selected. बेटा देखो तीक्षिका ये आ रहा है कि मेरा A3 पहले 3 दिन काम करता है, 1 2 3 और फिर ब्रेक लेता है. ठीक है, तो A की एक साइकिल कितने दिन की हुई? 4 डेज की एक साइकिल हुई. इस एक साइकिल में वो 3 यूनिट से काम कर रहा है, राइट? सिमिलरली B के लिए वो 1 2 3 4 5 डेज काम किया, फिर ब्रेक लिया 2 दिन. तो वो 7 डेज में एवरी 7 डेज ही इज एबल टू कंप्लीट 5 यूनिट्स. और उसी तरीके से C का आइडेंटिफाई किया बेटा. ठीक है, शिक्षिका क्लियर है? अंशिता ऑप्शन दिए होते, ऑप्शन इसलिए तो नहीं दिए हैं. ठीक है, I have deliberately removed all the options. चलो, let's move ahead to the next. चलें? ओए चलें? चलो आ जाओ. Solve this.
Sneha, perfect. Give me 2 minutes. Vraj, Anshruti, Venkat, right? Osho, wrong. Lakshay, right? Rohan, right? Dhruv, wrong. Mansi, wrong. Vandana, wrong. Achal, right? Last 1 minute. Okay. Fatafat. Kanchan, wrong. Aman, wrong. All right. So pipe P and Q are inlet pipe, while pipe R is outlet pipe. Pipe P supplies 30 liter per hour. Pipe Q can fill the tank in 6 hours and R can empty it in 24 hours. So let's take the LCM to find the total work that we have in terms of units, right? So 6 and 24, that means the total work that we have is, यहाँ पे x मान लेते हैं अगर तुमको confusion हो किसी को भी. So let's say 24x units is the total work that I have, right? Now all three of them start simultaneously, ठीक है? अब या 24x के ही मानना. देखो, एक यूनिट इज डिफरेंट, कैपेसिटी वुड बी डिफरेंट.
ठीक है, इस चीज को समझना। आशुतोष परफेक्ट, देवेश परफेक्ट, ठीक है। अभी मेरे को P का तो पता नहीं है, हाउ मच इज ही डूइंग, सो लेट्स से इट इज डूइंग प्लस एक्स, राइट, बिकॉज वी नो इट इज फिलिंग, तो प्लस में ही रहेगा। For Q, if you see, it is going to be plus 4 units every single hour, and for R it is going to be minus 1 unit every single hour, correct? Now it has been given that if all three work simultaneously, they take 2 hours to fill the tank. So if 2 hours they are taking to fill the tank, that means every hour they are doing 12 units. Now these two effectively are doing how much? These two are doing 3 units, right? So X, which is P plus effective of Q and R, is 3. Together they are doing 12 units in an hour. So X is becoming equal to 9 units. That means P is able to do 9 units of work every single hour. And we know that P is doing how much work? P is filling 30 liters every hour. So our 9 units is equal to 30 liters. So our 1 unit is equal to 3.33 liters, right? 1 unit. Total capacity is 24 unit. So 24 into 3.33 will give you the total capacity, that is 80 liters. Clear है? Guys, clear है? एक बार और, साकित कहां से बेटा? शॉर्ट में देख, सिंपल सी बात ये है कि मेरे को टाइम, वो यूनिट मैंने निकाल लिया, 6 और 24 का एलसीएम लेके मेरे को 24 यूनिट मिला। बोल रहा है जब तीनों काम करते हैं साथ में तो 2 घंटे में आफ्टर एफिशिएंसी, ठीक है। तो मेरे को पता है कि 2 घंटे में काम करना है तो 1 घंटे में 12 यूनिट काम करेंगे। पी का हमको यूनिट में नहीं पता है, ठीक है, तो हमने मान लिया वो एक्स यूनिट काम करता है। क्यू प्लस 4 यूनिट करता है, आर माइनस 1 यूनिट करता है। तो क्यू और आर मिलके कितना काम करते हैं? 3 यूनिट काम करते हैं 1 घंटे में। और 1 घंटे में टोटल तीनों मिलके कितना कर रहे हैं? 12 यूनिट काम कर रहे हैं। तो पी कितना करेगा? 9 यूनिट काम करेगा। तो 9 यूनिट काम पी करता है, और हमको पता है कि पी तो 30 लीटर काम करता है, ठीक है। तो 30 लीटर इज इक्वल टू 9 यूनिट, तो 1 यूनिट निकल गया, 1 यूनिट निकल गया, तो 24 इंटू 24 यूनिट है, तो 24 इंटू 1 लीटर इज इक्वल टू 24 इंटू 1 यूनिट का लीटर में वैल्यू इज विल गिव यू द टोटल कैपेसिटी, ठीक है। सॉर्टेड साकेत? ओके ओके, let's move ahead, try this one. ओशो परफेक्ट बेटा।
नहीं पता, कोई बात नहीं। सी 1 cubic meter is equal to 1000 liters. ये वैल्यू याद रख लेना, पेपर में भी नहीं देगा, सीधे क्वेश्चन पूछेगा। वेंकट परफेक्ट बेटा। देवेश परफेक्ट। वंदना परफेक्ट। वेनु परफेक्ट। 1 क्यूबिक मीटर नेहा। लक्ष्य परफेक्ट। लास्ट 1 मिनट। अंशुति परफेक्ट। आंचल परफेक्ट। गुड गाइस, वेरी गुड। सो भाई व्हाट डू वी हैव अ टैंक ऑफ डायमेंशन इतना, ठीक है। सो यू कैन से कि ओके दिस इज 10 18 into 10 into 8, the total volume is basically the capacity. So the volume over here is 1440 meter cube, right? If you want to convert it into liters, this would be 1440 and 000 liters. Okay, so this is the capacity. Now drain pipe can empty the tank in 50 hours. That means this much is the capacity of the tank and it can be drained in 50 hours. That means every single hour how much drainage is possible? 28,800 liters of drainage is possible every hour. This is for drain, right? And then you have how many liters I'm talking about, Naman. Okay, अच्छा तू आंसर दे रहा है, नहीं गलत है। An inlet pipe supplies water at rate of 6 liters per second. So inlet pipe is supplying water at rate of 6 liter in every second. So in 60 seconds or in 1 minute it will supply this much, and in 1 hour it will supply this much. So this will be 216,000 liters. So this much water is coming in, this much water is going out. That means effectively what is the ratio, what is the work rate? It is minus 7,200 liters every single hour. So in 1 hour we are able to empty 7,200 liters. So to empty this much, how much time is required? 200 hours. Clear? ये वैल्यू याद रख लेना टू कन्वर्ट, अगर पेपर में आया इट विल नॉट टेल यू दैट 1 cubic meter is 1000 liters. क्लियर है गाइस? क्लियर? तो थोड़ी लगेगा। All right. Let's move to the next. Solve this. रोहन उसको करके देख ले, तो बहुत सिंपल सी चीज है। मीटर को क्यूबिक मीटर को जो है सेंटीमीटर में कर ले कन्वर्ट। तो क्यूबिक मीटर 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 100 10,000 लाख 10 लाख हो जाएगा। तो 10 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो उससे कन्वर्ट कर ले, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कितना लीटर होगा।
Perfect, guys. Anshita, Devesh, Venu, everyone. Saket wrong. अरे बाप रे बाप, कितने लोगों ने आंसर दे दिया वे, एक ही मिनट में सबके आंसर. Good, good, good. All of you have solved. Let's come to the answer. So a certain number of taps fill the tank in 7 hours. Do we know the number of taps? No. Let's assume they are X in number, right? So how many? And let's say every single one of them is doing 1 unit in 1 hour. So X units will be done in every hour, and in 7 hours, 7X units will be done. This will be equal to the work done when 4 taps are removed. That means the number of taps are this. It would get filled, and they are working for 11 hours to make it entirely full, right? Work done in both the cases is the same for me. We just have to solve this. 11x minus 44. 44 is equal to 4x. X is equal to 11. That's my correct answer. Clear है? नहीं. Guys, मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक ठीक ठीक. हर्षा का हुआ. All right. Clear? Let's move to the next. Solve this. Osho, Devesh, Aman, Rohan, Anshruti, Shekhar, Lakshya, right? Saket. Harsha, right? Kanchan, right? Saket गलत है. मानसी रॉन्ग. मानसी, मुझे पता था कोई ना कोई ये गलती जरूर करेगा. मानसी क्वेश्चन पढ़, लास्ट लाइन, आंसर आ जाएगा तेरा भी. वेंकट, राइट? लास्ट 30 सेकेंड्स. मानसी फटाफट ठीक कर अपना आंसर, फटाफट ठीक कर. मानसी, सोच. ओके, सिंपल क्वेश्चन है. वी नो हाउ टू डू दिस. 2 men, 7 boys, do it in 14 days. 3 men, 8 boys, do it in 11 days, right? 28m plus 98b is equal to 33m plus 88b, right? What do we have? 5m is equal to 10b, m is equal to 2b. M is equal to 2, d will be equal to 1.
total work calculate कर लो. This will be 6 plus 8 multiplied by 11, that is 14 multiplied by 11, that is 154. Now 154 is the current work. It is 3 times of it. So the total work in our case is going to be 462. So 462 is to be done by what people? 8 men. 8 men will do 16 units. 6 boys will do 6 units. 462 divided by 22 is 21. Clear? Clear है? Sorted? आगे बढ़े. Solve this. The problem begins. चल ओके प्रवेश तेरा तो गलत है. चल जस्ट होल्ड. ऑलराइट शेखर. मैं भी कंफर्म नहीं करूंगा शेखर. देयर इज गोइंग टू बी अ बिग डिबेट ऑन दिस क्वेश्चन. ऑलराइट सरदमन. I still feel I'm right. You guys are wrong. Neha, all right, same thing.
Someone come to my answer. नहीं देवेश तेरा गलत है. Alright, Osho, same thing, Osho. This is going to be debatable. Alright, Venkat. Aye. Chalo, keep solving. Give me 2 minutes. Shubham, you have arrived at my answer. Venu, same thing. It's a different one. Okay. बाकी लोग भी take 2 more minutes and so Ashutosh completely wrong. पिछले साल इस क्वेश्चन पे बहुत डिबेट हुई थी. But I am sure I'm right. Yes, Osho, that's mine. क्या चेंज किया है ओशो? ऑलराइट निकिता, सेम. तू मेरी एंटी पार्टी में है. ओके, लेट्स सी. थोड़ा सा लास्ट ईयर भी इसमें एक प्रॉब्लम आया था. ठीक है, 20 and 30. बट आई गो विथ 30. 20 आई फील इज रॉन्ग. ये क्वेश्चन हमने काफी जगह क्रॉस चेक भी किया था, काफी इस पे बहसबाजी भी हुई थी. आई टेल यू व्हाट आई एम डूइंग. ठीक है, and as per me, I don't think I'm doing anything wrong. So what I have over here is that my total work is given to me as 100 liters, right? Total work is 100 liters. The inlet pipe is doing 10 liters, right? Outlet pipe is unknown to me, so I'll say it is doing y liters. Okay, and the time taken to complete the job is x. Okay, let's say the time taken to complete the entire job is x hours, right? Now it is telling me that after 4 hours, so that means for the first 4 hours, let's talk about in 2 cases. Let's talk about case 1, right? So in case 1, for the first 4 hours, there was no leakage, so we were able to fill all the 10 liters. Now after that, see, the usual the time is, for me, the time is x hours, right? Usme se 4 hours have gone, right? So the remaining time left is x minus 4. Correct? Because I do not know the exact entire time, so I'll say okay, x minus 4. ठीक है? And after that, what is happening over here is that now my efficiency is 10 minus y, and this is how I am filling 100 liters, right? Or this is how I am doing the total work. ये clear है? समझ में आ रही है equation मेरी? ठीक है? Now upon solving, what we get is 40 plus 10x minus xy minus 40 plus 4y is equal to 100, right? So this, what I get is that 10x minus xy plus 4y is equal to 100. Now there is a case 2. So bhai, over here for the first 3 hours, I am not facing any trouble.
Now after that my efficiency is 10 minus y, correct? But now the time, initially it was x, so उस x में से 3 hours are gone and it is taking 2 hours longer. So another 2 hours it is taking. So for those 2 hours with this efficiency, I'll be filling. And this is how I am filling up 100 liters, right? Over here, what do I get? 30 plus, इसको मैं लिख ले रहा हूं, x minus 1, 10x minus 10 minus xy plus y is equal to 100. Or what I'll be getting over here is 10x minus xy plus y is equal to 80. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, 10x get cancelled, xy gets cancelled, 4y minus y is 3y and 100 minus 80 is 20. So y I am getting as equal to 6 point, y मेरा कितना आ रहा है, एक मिनट गड़बड़ कर रहे हैं क्या अपन, 3y 20, करेक्ट, हाँ 6.66, ठीक. Now it is asking me if the leak was there from the beginning. So if beginning से था तो 10 minus 6.66 is equal to 3.33 is my effective work. So 100 liters भरने में मेरे को लगेंगे 30 hours. This is what I believe is the right answer. ठीक है, but थोड़ा सा debatable है. Anyone who wants to present any other case? नहीं तो सही है, क्योंकि मैंने वही पहले दिया था, उसमें टाइम डिफरेंस से +2 का नहीं आ रहा था, वो +1 हो जा रहा था नेट टाइम. अच्छा, नेट टाइम उसमें +1 हो जा रहा था, हाँ तो फिर वो क्लियर. लास्ट टाइम भी हमने ये चीज बाद में वेरीफाई करी थी, नंदन ने ही जो खोज करके निकाला था कि जो है नहीं आंसर 30 होगा. बट फिर भी थोड़ा सा एक ये लोग कुछ लॉजिक बताते हैं, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, बट कुछ लॉजिक ये दे रहे थे जो कि उस समय ठीक साउंड कर रहा था. ठीक है, तो अभी क्लियर है, द आंसर शुड बी 30 आवर्स एंड नॉट 20 आवर्स. क्लियर है? ऑलराइट सर बताओ. ये जो 2 hours लॉन्गर है, इसमें ये +2 वाला नहीं आया समझ में मुझे, मतलब. अबे देख, मान लेते हैं मेरे पास 10 घंटे लगने थे, अब मेरे 2 घंटे ज्यादा लगे, करेक्ट? तो अच्छा ऐड करेंगे. हाँ 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 बोलो बोलो. बीच में कुछ बोला, चलो सॉरी. ठीक. तो 3 आवर्स निकल गए, ठीक. तो मेरे पास अभी 3 आवर्स 10, पहले मेरे पास 10 आवर्स लगते थे, 3 आवर्स मेरे निकल गए, ठीक. तो मेरे को 7 आवर्स और काम करना है, ठीक. दैट इज x minus 3 और बेसिकली 10 minus 3 इफ आई एम अज्यूमिंग इट टू बी 10. तो अगर वो 12 हो जाएगा तो मेरे को एक्चुअली में कितना काम करना है, 9 घंटे काम करना पड़ेगा. तो x minus 3 में +2 करेगा ना, और दो पहले 3 घंटे तो हमको नॉर्मल 10 के उससे काम किया, उसके बाद x minus 3 बचते थे, बट उसमें और 2 घंटे लगे, तो और वो 2 घंटे भी तो एक्स्ट्रा काम होगा ना, वो 10 minus y की एफिशिएंसी से. ठीक है ठीक है. ठीक है, हाँ जी. चलो लेट्स मूव अहेड, सॉल्व दिस. ओशो करेक्ट. अमन करेक्ट.
Rohan, correct? Vandana, correct? Raj, wrong. Venu, wrong. Raj, right? Pravesh, right? Last 2 minutes. Sardaman, Achal, Nagaraj, Anshita, right? आदित्य, तेरे तू आंसर क्यों नहीं कर रहा? शेखर, राइट? Venkat, right? All right, guys. What do we have? So let's assume that A does A units in 1 hour and B does B units in 1 hour, right? So it is telling me that if they are working for 10 hours, they will do this much, and this manner they are working for 10 days. This is the work. Against, if they are working, if A is working only for 9 hours and B is working for 10 hours, but the efficiency of 60% more. That means 1.6B. So 1.6B into 10 will be 16B. This is how if they work for 8 days, right? This is what we have. So 100A plus 100B is equal to 72A plus 128B. So we get 28A is equal to 28B, or we get A is equal to B. So I can say that A is equal to B, which is both of them are equal to 1. So my total work would be 10 plus 10 multiplied by 10, that is 200 units is my total work. The question is find the time B would take alone at usual efficiency. So by 200, and B is able to do how many units in a day? 10 units in a day. Okay, because he is working 10 hours a day. So how much time will it take? 20 days. Clear? Clear है? Solve this.
Saket, wrong. Sardaman, wrong. कुछ गड़बड़ नहीं है ब्रज. हाँ, लक्ष्य, yes. Rohan, right. Perfect. Osho, wrong. Sardaman, wrong. Vandana, right. Devesh, right. Raj, right. Osho, still wrong. Osho क्या मेहनत कर रहा है, छोड़ दे. ओशो आंसर निकाल रहा है 21 घंटे 40 मिनट 16 घंटे 40 मिनट. अमन रॉन्ग. अमन भी निकाल रहा है 21 घंटे 40 मिनट. वेनु रॉन्ग. बताओ बताओ, सोचो सोचो, 2 और मिनट दे रहा हूँ सोचने के लिए. हर्षा रॉन्ग. वेंकट राइट. ओशो. ओशो बोला तेरे को मत कर सॉल्व. ऑलराइट. अंशुति रॉन्ग. देखो. So we have been given there is a tank of height 16 meters. Okay. So मान लेते हैं ये 16 meters की height है. 3/4 की बात कर रहा है ना. हाँ, एक आउटलेट पाइप जो है यहाँ पे 12 मीटर पे आउटलेट पाइप है. इनलेट पाइप इज नो मैटर व्हाट पोजीशन इनलेट पाइप हैज, वी डू नॉट केयर. इनलेट पाइप है तो डालना ही है, तो ऊपर रहे नीचे रहे वो तो फिल करता ही रहेगा. तो इनलेट पाइप का पोजीशन इज irrelevant. Now it has been saying that inlet pipe can fill a empty tank in 10 hours while outlet pipe can empty a full tank in 8 hours. Let's take the LCM of 10 and 8. We arrive at 40 units is the total work. Right? 40 units is the total work. Up till here, how much will it be? It will be 30 units. And over here, it will be 10 units. Now the question is, ki one inlet pipe is at the bottom, fine. Other is at 8 meter mark, unnecessary information. Another inlet pipe can fill an empty tank each. अच्छा ठीक है. इनलेट कहाँ पे, आउटलेट एक नीचे है एक वहां पे है, ठीक है. तो दिस आउटलेट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव, बोथ द इनलेट्स आर गोइंग टू बी इफेक्टिव. नाउ द इनलेट पाइप कैन fill an empty tank in 10 hours, so it means it is doing +4 unit. Outlet is doing it in 8 hours, so it is doing -5 units. Now tank is initially full, that means both the inlet both the outlet pipes are working, right? That means they are effectively removing 2 units, right? Let's say they have removed it up till here in 5 hours. They have removed this up till here, these 10 units they were able to remove in 5 hours because effective work is -2 units. After that, this outlet pipe is of no use to me.
That means now I am working with 2 inlet pipes and I am working with 1 outlet pipe. So effective work that I am doing is plus 3 units. Right? After this, my effective work would be plus 3 units. तो भाई पानी तो कभी नीचे जाएगा ही नहीं. So in how much time will it be empty? Never. Clear? ओशो तू क्या सॉल्व कर रहा था समझा मेरे को. 21.5 घंटे, 16.5 घंटे, 20 घंटे. समझाइए जरा क्या मेरे को. बोलना सर, क्या नहीं समझा मैं, क्या फुल नहीं करेगा पूरा? भाई ये वाला जो आउटलेट पाइप है, ये तो मेरे लिए अब किसी काम का रह नहीं गया जब हम यहाँ पे पहुंच गए. राइट? अब इसके नीचे इस आउटलेट पाइप का तो रोल है ही नहीं. जैसे ही हम उसके हल्का सा भी नीचे गए, और उसके जैसे ही हम हल्का सा नीचे गए, उसका केस जैसे ही खत्म हुआ, नाउ आई हैव 2 इनलेट पाइप्स. तो इनलेट में मैं 8 यूनिट डाल रहा हूँ, 5 यूनिट निकाल रहा हूँ, तो वो तो दोबारा बढ़ के इसके ऊपर चला जाएगा, और फिर दोबारा नीचे आएगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा. इसी पे वो खेलता रहेगा, वो कभी गिरेगा ही नहीं पानी, पानी का लेवल. सो इट विल नेवर बी एम्प्टी. ठीक है? ये ऑप्शन वाले में हमने सही तुझे खेले जानबूझ सर. के नहीं दिए ना ऑप्शन. तुमको पता कैसे चलेगा कि मैं कितना बुरा आदमी हूँ? हाँ बोलो, क्या बोल रहा था कौन? ये वाले में बहुत सही खेले आप. टीटा में ये आ ही नहीं सकता. मैं वही तो सोचूं तभी मैंने मैंने आपको. कहा, मैंने तो नहीं बोला है किसी को कि मैं ऐसे ही क्वेश्चन टीटा में डालूंगा. बेटा टीएसडी में तो मैं तुमको रुला दूंगा. मैं तो सारे, क्योंकि टीएसडी सबसे ज्यादा कोई चीज अगर ऑप्शन हो सकती है तो वो टीएसडी है. मैं सारे ऑप्शन उड़ा के लेके आऊंगा. लो बेटा, दिखाओ अपने जलवे. क्लियर है? ऐसे नहीं वो कार्तिक बोलता है कि ये सब हरकतें मैं जो अब मैं करना शुरू करूंगा तुम्हारे साथ अभी ऐसी पता गंदी लगा हरकतें. क्यों क्यों कह रहे थे पिछले साल अंदर. क्लियर है? चले आगे. हाँ चलो. ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माइंड. इसके बाद सारा हम जो है कैट के क्वेश्चंस करेंगे, 17, 18, 19 के. शेखर राइट.
चलो ठीक है बेटा। हाँ भाई, सो आई हाँ या ऑल ऑफ यू आर राइट एक्सेप्ट नमन। नमन गलत है। लास्ट 2 minutes। All right. So what do we have? When they work alone, B takes 40% more time than A to complete the work. Okay, so A and B cut time and efficiency. Let's say A takes 5x, so B will take 7x time. Efficiency कितनी हो जाएगी? 7 and 5 will be the efficiency that they have. Now it has been telling you that A and B start the work together and they work for 6 days. So together they are able to do 12 units, and for 6 days if they work, they are able to do 72 units, right? Now after doing this, it has been given B leaves and A works another 40% of total work. So A is alone doing 40%, and B after that is alone doing 42%. That means both these people alone have done 82% of the work. That means together they must have done only 18% of the work. Now 18% of total work is 72 units. So total work will turn out to be 400 units. Now how much time will B take? So he will take 400 units at the efficiency of 5 per day. B is going to take 80 days. Clear? Clear hai? All right. So now will be 40 plus 40. अरे एक से वो बोल रहा है कि A ने 40% ऑफ टोटल वर्क करा अकेले जब B छोड़ के चला गया, और फिर A छोड़ के चला गया। एक सेकेंड, हाँ वत्सल बताओ। अच्छा एक काम करो, मेरे को फोटो अलग से भेज दो, है ना? और बट जब मैं तुमको कर रहा था तब ये दिक्कत नहीं आ रही थी, करेक्ट? तब ट्रेलिंग में ही जा रहा था। लेकिन फिर वो अगर नया मेल की तरह जा रहा है तो वो भी तो दिक्कत करेगा। तो ये नए मेल की तरह जाएगा तो दिक्कत है कि नहीं है? हाँ वो तो मैं अपने रिप्लाई में डाल दूंगा। हम्म हम्म वो तो ज्यादा सही रहेगा। लाओ एक बार, 1 मिनट रुको, मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, तुम भेजो मेरे को, मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, है ना? उसी को करूँ? ठीक है, रुको 2 मिनट रुको, मैं कर रहा हूँ। ओके गाइस, 2 मिनट रुकना, एक छोटा सा काम है। तो 1 क्वेश्चन इज मिस्ड, ठीक है? चलो कोई दिक्कत नहीं है। शेखर परफेक्ट। देवेश, लक्ष्य, ओशो परफेक्ट। दीक्षिका, श्रीहिता, रोहन परफेक्ट। साकेत परफेक्ट। मानसी रॉन्ग, कंचन राइट, वेनु राइट।
yes, obviously, Tirshika. CAT के questions are very easy. Anytime CAT के questions are easier. है ना? Nikita right, Mansi right. Okay, so again a simple one. Amal can complete a job in 10 days, Bimal in 8 days. We'll take the LCM. Again, the same figures. CAT always uses very similar figures. 40 units is the total work, right? Amal can do +4, Bimal can do +5. It has been said together, these three people were able to do it in 4 days. That means together, this guy, when Kamal is also involved, by in 4 days, if they are able to do, that means every day 10 units. So that means Kamal bhai will do 1 unit. Now the ratio of money will be 4:5:1. So out of 1,000 rupees, how much will be going for Kishan? 4 plus 5 plus 1, 10. 10x is equal to 1,000. X is equal to 100 rupees. Clear hai? Sorted? Now CAT 2018. This was the toughest quant ka paper in 8 years. In the past decade, this was the toughest CAT paper. Toughest QA paper. So इसके थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, slightly difficult, possible. Shekhar, perfect. Shubham, perfect. Diksha, perfect. Raj, perfect. Osho, perfect. Saket, Lakshya, perfect. Last 1 minute, last 2 minutes. Anshita, perfect. Venkat, perfect. Naman, wrong. Last 1 minute. Sardaman, right. Sneha, right.
All right, guys, let's see what do we have. So B needs 25% more time to finish a job than A does. Okay, so let's say that A takes 4x time, B takes 5x time, right? So that means the efficiency of their work would be 5:4, correct? Now it has been given that the two finish the job in 13 days in the following manner. A works till half the job is done. That means A does 50% of the job. Then they together do work for 4 days, right? So, and then B does 5% of the job. So 5% and 50% have been done alone. Apart from that, together they have done 9 units every day they are able to do. And they did the work for how many days? 4 days. That means they together have completed 36 units in 4 days. And this is equal to 45% of the total work. So 100% of the total work will be कितना हो रहा है 100% of the total work. The total work is going to be कितना आ रहा है जल्दी बताओ 80. So the total work is turning out to be 80. Now it is asking B को कितना time लगेगा. So 80 units is the total work. 4 he can do. So he will take 20 days to finish up the job. Clear है guys? Clear है? Any doubts? भैया इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? किसको? 45% को 36 वाले मैं मारब तो क्या 45% of total is 36. So 45 by 100 of in multiply of मतलब multiply is equal 36. T के लिए solve कर ले. Clear? Solve this. Anshruti wrong. Osho Shekhar right. Lakshay right. Shubham right. Harsha right. Diksha right. Anshita right. Devesh wrong beta. Vraj right. Sneha wrong. Venkat right.
Vandana wrong, Nagaraj right. Last 2 minutes. Shrita right, Anshruti wrong, Aman right. Devesh wrong. Last 1 minute. All right. Devesh, Anshruti, Mansi wrong. So it has been given a tank is fitted with pipes, some filling and some draining. All filling pipes fill at the same rate. All draining pipes drain at the same rate. So filling का मान लेते हैं efficiency is F, drilling का is D. Now it has been telling empty tank gets filled in 6 hours when 6 filling. So 6 filling will do 6F and 5 draining will do this much of impact, right? Together they are working for 6 hours. This is similar to the time taken when it is time taken is 60 hours when there are 5 fillings and 6 draining, right? Both these are same. So let's solve it. 36F minus 30D is equal to 300F minus 360D. So we have 330D is equal to 264F. This will go, both of them will go in 3. 3 के टेबल में जाएगा 110. D is equal to 88F. Now this is D by F is equal to 4 by 5. Or we can say if D is 4, F is 5. Right? Now D is 4, F is 5, we know. Uske baad we can calculate the total work. So total work would be 6 into 6 5s are 30 minus 5 4s are 20. So the total work is 60 units. Now it has to be done by 1 draining and 2 filling. So 2 filling will do 10 units, 1 draining will do minus 4. That means 6 unit effectively they will be doing. So 6 unit effectively if they'll be doing, how many hours are required? 10 hours are required. Clear hai? Clear hai guys? Let's move to the next. Try this one.
Devesh wrong. Devesh wrong. Think, guys, think. Shubham wrong. Osho wrong. Shubham, you're close. Osho wrong. Shubham perfect. Aman perfect. Last 1 minute. Shekhar wrong. Diksha perfect. Naman perfect. All right. Next, what do we have? Ki bhai, a tank is emptied every day at a fixed point of time. Immediately thereafter, either pump A or pump B or both start working. Anshita wrong, Devesh wrong. Working until the tank is full. On Monday, A alone completed filling the tank at 8 p.m. On Tuesday, B alone completed filling the tank at 6 p.m. On Wednesday, A alone worked till 5 p.m. Then B alone worked from 5 to 7 p.m. So let's say we do not know the start time, but we know the start time is same every single day. So from the start time till the time is 8 p.m., let's say there are X hours, whatever be the start time, till X p.m. there are X hours from, let's say, from any whatever point it is, 8 p.m. is X hours. So those X hours A did at A ka efficiency. Then if B had to work, now B was able to fill it by 6 p.m. So from the same point to 8 p.m. it is X hours. So from same point to 6 p.m. would be X minus 2 hours with the efficiency of B. And then what do we have? That A worked till 5 p.m. That means X minus 3 hours A worked, and after that B worked for 2 hours. All these work that we have are same. So what do we have? XA is equal to XB minus 2B is equal to XA minus 3A plus 2B. Correct? So what next do we have? Ki bhai, let's say XA is equal to XA minus 3A plus 2B. So in that case, I have this gone. I have 2B is equal to 3A. So can I say that my A will be equal to
2, and in that case my B will be equal to 3. So now I know the efficiency of both, right? I know the efficiency of both. The only thing I need to do is find the value of X, right? So let's try and identify the value of X. How will we be finding it out? X कैसे निकलेगा बे? अच्छा हाँ, the idiot I am. 2A is equal to 3B minus 2 into 3, 6. So what I have is 6 is equal to B. So now I know that, sorry, X, my X is equal to 6. If X is equal to 6 and X was from start to 8 p.m., that means the start time is 2 p.m. and the total work that I have is 6 hours के हिसाब से 2 units every hour. I have 12 units of work. The total work that I have is only 12 units. So to complete 12 units, but both of them are working together, we are doing 5 units effectively. That is 2.4 hours. From 2 p.m. 2.4 hours is 4:24. Clear? Everyone? वापस क्या चीज रोहन बताओ कहां से? सर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया ना आपने 2a इज इक्वल टू 3x माइनस 6, वो वाला नहीं समझा। ये वाला हाँ यहां से किया। a पता है 2, b पता है 3, तो 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 6, तो x इज इक्वल टू 6। क्लियर? हाँ हाँ। Let's move ahead. Try this one.
Ashutosh wrong, Mansi wrong, Vandana right. Devesh right, Rohan right, Aman right. Osho right. जो उस समय भी मैं म्यूट पे था गया. अंशिता right, शेखर right, मानसी wrong, सरदमन right. Alright guys, let's see. भाई अपने को क्या दिया है? Ramesh and Ganesh can together complete a piece of work in 16 days. So let's say that the total work that we have is 16 units, right? Is 16 units. Then it has been said that together, okay. Okay. So let's say the efficiency with which they work are R and G, and we know that R plus G is equal to R plus G will be equal to 1 because 16 units, 16 days, 1 unit per day. Then after 7 days, so for 7 days, this work was done. 1 unit was done for 7 days. So that means remaining is 9 units. Now for doing these 9 units, they take a total of 9 days. नहीं, 7 days हुए ना. हाँ, so complete these 9 units, they took a total of 10 days. That means every single day they were able to do 0.9 units. Now Ramesh is now working at a 30% lesser efficiency. That means he is working with this efficiency 0.7 hour. Ganesh is working with the same efficiency, and this is the manner in which they are able to do 0.9 units. Next, you have that R plus G is equal to 1 unit. Two equation in two variables, solve it. Right? What do you get? 0.3 R is equal to 0.1, or R is equal to 0.33. Right? So R is equal to 0.33, so G will be equal to 0.66. This is what we have. Now what do we have? If Ganesh had worked alone after Ramesh got sick, in how many days would he have completed the remaining work? So remaining work was still 9 units. If Ganesh was alone doing it, 0.66, he would have taken 13.5 days to complete the work. Clear है? Clear? सर ये एक बार 9/10 बता दो ना. 7 दिन में 7 यूनिट काम किया. हाँ. पेंडिंग काम कितना है? 9 यूनिट. 9 और दिन यूनिट. कितने लगे भाई? टोटल 17 दिन में काम कंप्लीट हुआ, तो 10 दिन और लग गए. तो वो 9 यूनिट करने में 10 दिन लगे, तो पर डे 0.9 यूनिट काम हुआ. ठीक है. क्लियर? सॉल्व.
Nagraj, Harsha, Devesh, right? Shubham, right? Diksha, right? Shekhar, wrong. Osho, right? Anshruti, right? Mansi, wrong. Naman, wrong. Lakshay, right? Rohan, right? Neha, right? Venkat, right? Mansi, right? Last 1 minute. Vandana, right? Okay. So what do we have? A water tank has inlet pipe of Tichika, right? Two types A and B. All inlet of A are same type. All of B are of same type. So let's say the efficiency of type A is A and the efficiency of type B is B. Now 10 types of inlet A and 45 of inlet B are there. In that case, it takes 30 minutes. Let's go by 30 only minutes only. And when there are 8A and 18 of B, it takes 1 hour. That means you can say it takes 60 minutes, right? Let's solve this. 300A plus 45 into 3, 135. 0B is equal to 8648 480A plus 186 0B. This is what we have. So 180A is equal to 100 200 1150 300 300 में से 30 का 270B, or you can say that 2A is equal to 3B. In that case, A will be equal to 3 and B will be equal to 2, right? So this is what we have. Now you can calculate the total work that is there. So 10 into 3, 30 plus 45 into 2, 45 into 2, 90 multiplied by 30. So the total work that we have is 120 into 30 is equal to 12 3s are 36, 3600 units is the total work. Now it is saying that when there are 7 inlet A, so 7 inlet A means 7 into 3 and 27 inlet B, that is 27 into 2, 21 plus 54, that means when we have 75 units doing per minute and we have to fill 3600 units, the time taken over here is going to be 48 minutes. Clear here, everyone? Everyone is clear on this? Let's move to the year 2019. Last 4 questions. Osho perfect. Lakshay perfect. Rohan perfect.
Shekhar, perfect. Devesh wrong, Vandana right. Anshruti wrong. Venkat, Shrihita, Aman right. Last 1 minute. Again, a very simple one. ऐसे कोई जनरलाइज नहीं कर सकते रोहन. दीक्षा, कंचन, ऑल ऑफ यू आर राइट. देवेश राइट. दीक्षिका गलत है बेटा. ऑल राइट. Okay, so what do we have? At their usual efficiency, A and B together finish a task in 12 days. If A had worked half as efficiently as she usually does, and B had worked thrice as efficiently as he usually does, the task would have been completed in 9 days. We do not know the efficiencies. So what we can say is that 12A plus 12B is equal, this is the total work, and again the total work is, now this time A is doing A by 2, so A by 2 के हिसाब से 9 days, so 4.5 A, 9 into A by 2 plus 3B into 9, 27B, right? This is the total worker ratio that they have been given. So what do we get from here is 7.5 A is equal to 15B, or we can say that A is equal to 2B. So A is equal to 2, B is equal to 1, right? This is what we have got. Now the question is, how many days would A take to finish the task if she works alone at her usual efficiency? First, let's calculate the total work that we have. So 12 into 2, 24, plus 12 into 1, 12. That means the total work that we have is 36 units. So to do 36 units at the efficiency of A, that is 2, we need 18 days. Clear, everyone? Started? Solve this. Shekhar, right? No one wrong.
Sneha, right? Aman, wrong. Shubham, right? Saket, wrong. Diksha, right? Vandana, right? Last 1 minute. Harsha, wrong. Rohan, right? Devesh, right? Anchal, wrong. Mansi, wrong. All right. So we have been given that 3 men and 8 machine can finish a job in half the time taken by 3 machine and 8 men to finish the job. That means if they are taking half the time, that simply means they are doing twice the work. Okay. So we have been given that 2 men and 8 machines. Man is represented by M1, machine is represented by M2. Right? This work that they are doing is twice the work done by 3 machines and 8 men. Right? So we can say that 3M1 plus 8M2 is 6M2 plus 16M1. So from here I can say that 2M2 is equal to 13M1. That means the work done by 2 machines is equal to work done by 13 men. So if 2 machines can do a job in 13 days, then how many men can finish the job in 13 days? So equal amount of time is required. So total work done by both the parties should be equal. So 2 machine in 13 days. So 13 men in 13 days. 13 will become the right answer. Clear? Clear hai? All right. Let's move to the next. Last 2 questions. Solve this. All right, Pravesh. All right, Devesh. 2 different answers from 2 different people. Pravesh wrong, Devesh right. Shubham right.
Lakshya wrong. Harsha wrong. Vandana, Anshruti right. Ichika right. Pravesh right. Rohan wrong. Aman wrong. Last 2 minutes. Diksha right. Rohan right. Neha Shrita right. Alright guys. So we have been given that Anil can do the job in 20 days. Osho right. Sunil can do it in 40 days. So let's take the LCM. LCM gives me 20 and 40. Total work LCM is giving me 40 units. Right. Now Anil is able to do +2 units and Sunil is able to do +1 unit. Now Anil starts the job, okay, and he works for 3 days. Okay, so Anil has worked for 3 days. Then Sunil joins him. After a few more days, Bimal joins them and together they finish the job. So Anil alone has done 6 units, right? Out of the total work, Bimal has done 10%, that is 4 units. That means the remaining 30 units was done by both of them. So if both of them have done those 13 units, that means 2 plus 1, 3 units a day. So they must have taken 10 days together, right? So for 10 days, they must have worked together. So 6 plus 30 units, 36. And after that, see, after that, next day, Anil must have done 2, Sunil must have done 1, and that means the 1 unit must have been done by this guy Bimal, who only worked for 1 single day, right? Now the question is, how many days was the job done? Okay, irrelevant. 3 days from here, 10 days from here. एक मिनट नहीं रुको, हट, क्या कर रहा हूं मैं, क्या कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, एक मिनट. 30 यूनिट में दोनों ने किया होगा 10 दिन में, ठीक है. उन्होंने जॉब साथ में खत्म की है, तो इन्होंने लाइक बीमल ने कितनी भी एफिशिएंसी से वो 4 यूनिट किया हो, लेकिन किया तो उसने 10 दिन में ही है, या मतलब जितने दिन में भी किया हो उससे लाइक फर्क नहीं पड़ेगा ना, जॉब साथ में खत्म हो गई. एन लेके कर लो ना सर वैसे. उससे अच्छा एक और ट्राई कर सकते हैं, मतलब लाइक कि 90% वर्क इन्होंने किया है, उसने 10% वर्क किया है ना, हाँ. तो 10% अलग अलग से निकाल दो. 40 यूनिट में से 10% निकाल दिया, एक मिनट. अलग हुआ. अच्छा, ओके, सॉरी, ठीक 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 ठीक. दीज 4 यूनिट्स वी हैव ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर, ठीक है. ये 10 डेज जो हमारा आ रहा है, 30 डिवाइडेड बाय 3, दीज 10 डेज, दिस इज in these days, this guy Bimal is also included. So the total time taken is these 3 days, and these 10 days, the total time taken is 13 days. अभी clear है? Sorry, clear है? Sorted? चलो. Welcome to the last question for the day. इसका तुम लोग की छुट्टी. सॉल्व करो.
Osho, I think you are right. Osho correct. Aditya correct. Nagaraj correct. Shubham wrong. Just give me a minute. All right, Devesh. All right, Venu. Both of you are right. Shubham right. Vandana right. Mansi wrong. मैं अभी चाय पीऊंगा। हाँ भाई। Diksha right. Mansi wrong. Last 30 seconds. Sardaman wrong. Shrita wrong. Sneha right. All right, guys. So John gets 57 per hour of regular work and 114 per hour of overtime. Right? He worked altogether 72 hours. So let's say the regular hours that he worked is X. The overtime hours that he worked is Y. Right? So from regular hours, his income would be 57X. From overtime hours, his income would be 114Y. We also know that X plus Y is total is 172. We also know that 114Y is 15% of regular income. So 15% of 57X, right? So 114Y is equal to 15 by 100 multiplied by 57X. Let's solve it. What do we get? 2, 3 and 20. 40 by 3 is equal to X by Y. Okay. So that means the ratio of X is to Y is 40 is to 3. That means 40A and 3A. Together it becomes 43A. Right? Now 172 hours is the total. So divided by 43A gives you 4. That means regular hours will be 160. These hours will be 12. Correct? So the correct answer for this question is going to be 12. Clear hai? Sorted? Clear hai? So we're done with time and work. ठीक है? थक गए? नहीं? चलो. Now you guys can leave. I'll upload the recording tomorrow. ठीक है? 50 नहीं थे, आज 40 ही थे. आज 40 क्वेश्चन थे. Yes, Shekhar. हाँ, ओशो बताओ बेटा. Any doubts that you have? बताओ. हाँ, 9 बजे से बैच मीट. क्वेश्चन जो था मैं डिस्कनेक्ट हो गया था उस टाइम से. क्या चीज ओशो? 22nd नंबर जो क्वेश्चन था, एक बार
सोल्यूशन सबसे क्या 20 सेकंड 20 नंबर सेकेंड? नहीं आदित्य, अरे रे दादा आ गया बताओ, बोलो। एक बार आप बता दो कि मैं डिस्कनेक्ट कर गया था, मेरा आंसर अच्छा इसमें अच्छा डिफरेंट अच्छा, देखो मैंने एलसीएम ले लिया तो टोटल वर्क मैंने निकाला 24 यूनिट। अब पाइप क्यू जो है वो 6 घंटे में भरता है तो वो +4 करता है, पाइप आर 24 घंटे में खाली करता है तो वो -1 करता है। तो इफेक्टिवली ये दोनों मिलके कितना काम करते हैं? 3 यूनिट 1 घंटे में करते हैं। ठीक, अच्छा 24 यूनिट काम जब तीनों काम कर रहे हैं तो 2 घंटे में हो जा रहा है। तो इसका मतलब 1 घंटे में 12 यूनिट काम होता है, और क्यू और आर मिलकर के 3 यूनिट करते हैं, करेक्ट? तो इसका मतलब कि फिर तुम्हारा पी जो है बाकी के बच्चे 9 यूनिट करेगा। ठीक, और पी का जो 9 यूनिट है वो हमको पता है 30 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट का मतलब हो गया 3.33 लीटर। तो 24 यूनिट का जो वर्क है वो लीटर में क्या होगा? 24 इंटू 3.33 दैट इज 80 लीटर्स। सॉर्टेड। यस सर। रोहन 39 बता रोहन। सर मैंने ये वैल्यूज अज्यूम करके कर लिया था, पर आपने जो एक्सप्लेन किया वो समझा नहीं मुझे। मैंने ये किया कि भाई पहले अनिल ने 3 दिन में 6 यूनिट काम कर दिया, ठीक है? अब हाँ उसके बाद जो है इन दोनों ने काम शुरू किया और कुछ दिन बाद बिमल भी आ गया काम करने। तो बिमल ने तो 10% काम किया, वो 4 दिन काम किया। अब उस 4 दिन में ए और बी भी साथ में थे उसके, ठीक? नहीं नहीं सर, पर उसने 4 दिन में ही वो काम किया, ये कैसे डिसाइड हुआ? मतलब मैंने वो कहा दो बोला यूनिट भी उसने कर 4 सकता। दिन में काम किया, मैंने बोला उसने 4 यूनिट काम किया। उसने अच्छा 4 हाँ। यूनिट काम किया। और वो 4 यूनिट काम जब भी उसने किया ए और बी उसके साथ ही थे, कहीं गए तो नहीं थे वो, राइट? तो ए और बी ने साथ में मिलके कितना यूनिट काम कर, भाई 4 इसने कर दिया, 6 ए ने अकेले कर दिया, तो बचा 30 यूनिट काम ए और बी को मिलकर के करना था। तो इन दोनों को लग रही है 10 दिन, और उसी 10 दिन में कभी जो है बिमल भी आ गया होगा, उसने भी अपने 4 यूनिट निपटा दिए हो। ठीक है, समझा? हाँ ठीक है। हाँ हाँ। नहीं आदित्य, मैं सेशन के बाद ही अपलोड करूंगा, है ना? तो उसमें से जिसको करना हो वो बाद में कर सकता है, वो अलग मैटर है ना? मेरे यहाँ पे कराने का मोटिव अलग है। ए प्रवेश, अब एक एक क्वेश्चन का डाउट मत लेके आओ यार, इसमें मैं क्या बताऊं प्रवेश तेरे को, रोज यही करते हैं हम, एक एक क्वेश्चन का अब मैं डाउट ले लेता, ये करके तुम 40 क्वेश्चन में सारे लगवा दो, जो है दोबारा पीडीएफ। बैठ के जो 8 बजे तक अबे बैठ के मैं लगाऊं। नहीं, एनोटेशन वाली पीपीटी दे रहा हूँ मैं अभी। बीच में एक डाउट आया था तो वो हाँ, क्वेश्चन नहीं, भूल गया मैं वो क्वेश्चन। तो तूने अपने मर्जी से 38 बोल दिया नहीं, मेरे को लगा इसी के पहले था, वो नहीं है शायद वो। भाई ऐसे। अब पीपीटी चलो, शेयर कर देना। हाँ अभी कर रहा हूँ 10 मिनट में पीपीटी, तो अभी शेयर कर। हाँ। चलो ऑलराइट, बाय बाय।